Hello everyone, it is the 16th today. We are doing CMA Foundation, in which we are doing day 1 of Score Up, and we are starting with mathematics. The first chapter that we are going to do in mathematics is ratio and proportion. In the next 2 to 3 minutes, I am going to write down the important basics of ratio and proportion, which you are going to write along with me, and then we are going to continue into whatever we have to do next. So, the first and the most basics is that a ratio is a comparison between two or more similar commodities. What is a ratio? It is a comparison. A comparison between what? Two or more similar commodities. मतलब weight, age. आपका वेट मेरे वेट से कंपेयर होगा, आपकी हाइट मेरे हाइट से कंपेयर होगी, आपका एज मेरे एज से कंपेयर होगा, आपकी सैलरी मेरे सैलरी से कंपेयर होगी. You cannot compare my height with your weight. Does not make sense. There is no result that will come out of it. तो अगर कंपैरिजन करना है तो कमोडिटी सिमिलर होनी चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, सैलरीज अगर कंपेयर कर रहे हो तो मेरी सैलरी अगर रुपीज में तो आपकी भी क्या होनी चाहिए. सो दे आर नॉट ओनली सिमिलर कमोडिटीज, दे ऑल्सो नीड टू बी हैविंग द सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. कमोडिटीज तो सेम होनी चाहिए बट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए. अब बिकॉज ऑफ विच, वेरी क्विकली, आपका एज है लेट्स से 60 केजी, मेरा एज है, मेरा वेट है लेट्स से 40 केजी. 60 kg, 40 kg are weights. The moment you write this down and you ask me to take a ratio, हम 0 cancel कर देते हैं. Then there is 2 2s are 4, 2 3s are 6. Correct? Do I write this as 3:2 or 3 kg is to 2 kg? Not kg. तो can I say kg भी cancel हो जाता है? Units will also cancel out. And that is why एक रेशियो को कभी भी यूनिट्स नहीं होते. अ रेशियो इज ऑलवेज यूनिट फ्री. करेक्ट. अब जब एक रेशियो बनाया जाता है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला 3:2 है, पर ये 3:2 क्या था? 60 एंड 40 था जो 3:2 बना. तो कुछ कैंसिल करके बनाना. क्या कैंसिल करके बना? कैन आई से मैंने दोनों से 20 कैंसिल किया. एक कॉमन एलिमेंट था जो कैंसिल किया. तो अगर मैं बता दूं वो कॉमन एलिमेंट क्या है तो आप मुझे एक्चुअल वैल्यूज दे दोगे. तो अगर कल को मैं आपको बोलूं आपकी और मेरी सैलरी 1:2 के रेशियो में है, और अगर मैंने पूछ लिया अच्छा ठीक है बता क्या कॉमन कैंसिल क्या किया था तूने, और अगर आपने बोल दिया कि अरे मैंने दोनों में से कॉमन 5,000 कैंसिल किया था, देन कैन आई से आपकी सैलरी 5,000 और मेरी सैलरी 10,000 होनी चाहिए. बट व्हाट इफ मैं नहीं बता पाया कि वो दोनों कॉमन क्या है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कुछ तो कॉमन होगा. लेट्स कॉल इट के. एंड इफ आई कॉल इट के, और अगर तू कॉमन नहीं बता पाया, 5,000 जब कॉमन था तो इट इज 5,000 इंटू 1 एंड 5,000 इंटू 2. के अगर कॉमन है तो इट इज के इंटू 1 एंड इट इज के इंटू 2. सो द सैलरीज विल बी के एंड 2k. यहां मैंने बता दिया मैंने 20 कैंसिल किया था. व्हाट इफ मैं नहीं बताऊं कि 20 कैंसिल किया था, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कुछ के कैंसिल किया था. तो तेरा वेट 3k, मेरा वेट 2k. सो इफ आई गिव यू अ रेशियो a इज टू b, तो एक्चुअल वैल्यूज क्या होंगी? इन अ रेशियो a is to b, the actual values are ak and bk, where k is a constant. कोई कांस्टेंट वैल्यू सबट्रैक्ट की थी आपने? जब एक रेशियो लिखते हो, जब 3:2 लिखते हो, तो हम 3:2 को ना 3/2 भी लिख देते. ग्रेट. दोनों सेम है पर जमीन आसमान का फर्क है. यहां पर ना दे आर टू एंटिटीज दैट आर कंपेयर्ड, ये फ्रैक्शन हो जाता है. ये टेक्निकली दो कंपैरिजंस हैं, ये एक नंबर है.
लिखने की लिबर्टी है, बट इट इज नॉट द सेम एज अ फ्रैक्शन। यहां हम इसको न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर बुलाते हैं, यहां पे वैसा नहीं बुला सकते। एंड दैट इज वाई यहां 3 को एंटीसीडेंट बुलाते हैं और 2 को कॉन्सिक्वेंट। सो इन अ रेशियो A is to B, A is the antecedent and B is the consequent. Is this clear? I want you to very quickly write this bit down, please. Let me adjust my chair for better handwriting. लिखने का काम फटाफट कर देना प्लीज। In the meantime, online, any questions you have, drop them in the chat box. Offline, raise your hand, ask. जो आपने लेक्चर के टाइम पे बेसिक्स लिखे थे, दोज वर like a complete cover up. This is going to be only an exam perspective cover up. This is going to be what we call your LMS, your last minute screening or your last minute LMR बुला सकते हो, your last minute revision. All done? Anyone still writing? Quick.
Ashad, like I said, I will help you out. Give me some time. Are you done? Shall we? Ajao. Now, a very prominent question asked almost every attempt is the mean proportional, duplicating and triplicating. So to begin with, number one, let's finish the duplicating, triplicating bit. So if you give me a ratio A is to B या A by B और आपने मुझे बोल दिया कि इसको क्या करना है, duplicate करना है, तो duplicating is basically squaring. So that's A square is to B square, also known as A square upon B square. If I ask you, या उल्टा लिख देता हूं, let me write it this way. If you give me A is to B, or if you give me A by B, and you ask me to duplicate it, that's A square is to B square, or A square upon B square. If you ask me to triplicate the ratio, that's A cube is to B cube, or A cube upon B cube. If you ask me to take a square root, I will ask you to take a sub duplicate ratio, which is going to be the root of A is to the root of B, also known as root A by root B, and the sub triplicate will be cube root of A is to cube root of B, or cube root of A upon cube root of B. Last but not the least, if you ask me to invert the ratio or take an inverse of the ratio, then it's B is to A or B by A. Is it clear to everyone? Very quickly write that down for me, please. There are a lot of times called this types of ratios, but these are not types. These are operations that you can perform on a ratio. Every alternate attempt, या almost every attempt, एक question fixed है. Are you all done? Can I? आ जाओ to the next and the last bit, and that is if A, B, C, D are in
प्रपोर्शन, तो दो रिजल्ट्स हैं. रिजल्ट नंबर 1, a by b is equal to c by d. इन दोनों का रेशियो सेम होता है. एंड रिजल्ट नंबर 2, a into d is equal to b into c. ad is equal to b c. सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूं कि ए बी सी डी नहीं, ए बी सी आर इन प्रपोर्शन, तो ये गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि तीन एलिमेंट्स प्रपोर्शन में नहीं हो सकते. एक प्रपोर्शन के लिए दो रेशियो चाहिए और दो रेशियो के लिए चार एलिमेंट चाहिए. तो व्हाट इफ देयर आर ओनली थ्री एलिमेंट्स, मतलब ये कंटिन्यूअस या कंटिन्यूड प्रपोर्शन होगा. अगर ये कंटिन्यूअस या कंटिन्यूड प्रपोर्शन है तो रिजल्ट नंबर 1 इज कि ए और बी का जो रेशियो है वही बी और सी का है. दैट इज नंबर 1. एंड नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी, और बी इज द पॉजिटिव और द नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए सी. अब यहां बी इज कॉल्ड द मीन प्रपोर्शनल between A and C. Very quickly write that down for me. The basic required to do ratio proportion is at least taken care of. We are going to stop that there. You are now going to come to your second notebook. आ जाओ फटाफट second notebook में. And now we are going to start looking at what questions we have. If we think that there is a certain concept that is not being covered, we will very quickly take that up as well. Let's come to the first paper, which is the June 23 in the old syllabus. Can I say first question itself, which is question number 1. What does the question say? The question says, what is the mean proportional between 9 and 49? Can I say a very easy question? So if there is 9, let's call the mean proportional B, and then 49. तो अगर
ये मीन प्रोपोर्शनल है, मतलब 49 और 9 मल्टीप्लाई करके जो मिलता है वो बी का स्क्वायर होना चाहिए, विच मीन्स बी स्क्वायर इज 9 इंटू 49। तो बी स्क्वायर इज 9 एंड 49 को मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है 441। टेकिंग अ स्क्वायर रूट, b is plus minus root of 441, तो b is plus or minus 21। यहां पे क्या है, so 21 is going to be the answer। That's question number 1। question number 2 वेरिएशन है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13। what does question number 13 say? What is the duplicate ratio of 2:3? So, what is the duplicate of 2:3? Because duplicate means square. So, the duplicate of 4:2:3 is 4:9. So, B 4:9. Question number 14, 15, 16, 17, 18. What does the question say? Three numbers are in the ratio of 8:11:13, and the sum of the first and the third number is greater than the second by 60. The sum of the three numbers is, and this is what they will try to do in ratio and proportion. What I'm trying to say is, वो आपको 3 नंबर नहीं देंगे ऑप्शन में, क्योंकि फिर ऑप्शन इवैल्यूएट कर लोगे। दे विल मेक श्योर ऑप्शन इवैल्यूएशन पॉसिबल ना हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सो नंबर 1 3 नंबर है, हाउ आर दे एड्रेसिंग दैट, फर्स्ट थर्ड सेकंड ऐसा बुला रहे हैं, देन लेट्स अस आल्सो कॉल दिस द सेम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपको पहले क्या दिया है रेशियो, क्या है रेशियो उनका 8:11:13। तो अगर मैंने k इंट्रोड्यूस कर दिया तो मुझे एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी 8k 11k एंड 13k। if these are the three numbers, what do I know about them? The sum of the first and the third, first and third का sum is greater, बड़ा है, किससे बड़ा है than the second, second से बड़ा है, कितने से बड़ा है 60 से। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ऐड करता हूं तो जो वैल्यू मिलती है वो सेकंड से बड़ी है। whenever they give you something on these lines, if I tell you मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं 10 साल से, what does the 10 represent? It always represents a difference. When something is bigger, something is smaller, what they are trying to tell you is दोनों में फर्क है, और वो फर्क कितने का है 60 का। Now this is where I want you to be a little careful. Careful about what? बड़ा छोटा देख लेना, क्योंकि अगर आपने गलत पढ़ा तो उल्टा लिख दोगे। What do I mean? यहां पे पर्टिकुलरली बोला है कि ये बड़ा है इससे, अगर ये बड़ा है इससे तो जब डिफरेंस लोगे तो बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे। अगर ये बोलते कि फर्स्ट एंड थर्ड की जो टोटल है वो छोटी है सेकंड से, तो सेकंड बड़ा हुआ इसकी टोटल से, तो आगे क्या रखूंगा, इज दिस क्लियर? अगर मैं बोल दूं कि आपकी सैलरी मेरे सैलरी से कम है 10,000 से, तो पहले तो व्हेन दे से लेस दे मीन डिफरेंस है। डिफरेंस कितने से है 10,000 से, पर आपकी सैलरी कम है ना मेरी सैलरी से, तो जब डिफरेंस लूंगा तो मेरी सैलरी आगे होगी आपकी पीछे। द ग्रेटर नंबर इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट एंड द स्मॉलर इज सेकंड। यहां पे यही बड़ा है, तो कैन आई से फर्स्ट एंड थर्ड की टोटल को अगर सेकंड से सब्ट्रैक्ट करो तो 60 मिल जाना चाहिए। पर फर्स्ट क्या है 8 के, थर्ड क्या है 13 के, व्हाट डू यू गेट द
सेकंड क्या है, ये टोटल क्या होनी चाहिए 60, कैन आई से 13 प्लस 8 बिकम्स 21 के को जब 11 के से सब्ट्रैक्ट करते हो 60 आ जाता है, 10 के इज 60, तो के क्या हुआ, सो आई हैव फाइनली फाउंड द नंबर दैट यू कैंसल्ड। अगर जो कैंसिल किया हुआ नंबर है वो मिल गया, तो तीन एक्चुअल वैल्यूज क्या है, 8 के, 11 के एंड 13 के मिल गया ना, फिर वो भी 8k is going to be 8 into 6, 13 is 13 into 6, and 11 is 11 into 6. 8 6 are 48, 11 6 are 13 6 are 70. अब तीनों का क्या चाहिए आपको, सम ऑफ द थ्री नंबर्स, तो इनका जो सम है विल बी 48 प्लस 66 प्लस 78, which is this clear to everyone? 100%. Now, sir, can we evaluate options here? Well, technically the answer is yes. Now, why is the answer yes? Because what is given to you in the question is the values and the total, correct? And do you notice that the total is like a crisp total number? Then I'll tell you, अगर ये totals है ना, तो total value जो होगी वो इसकी total से perfectly divide हो जानी चाहिए. What is 8 plus 11 plus 13? 21. आंसर ऐसा नंबर होगा जो 21 से परफेक्टली डिवाइड होता है. 32, सो 90 को 32 से डिवाइड कर दो, क्या आता है, नहीं चलेगा. 92 को 32 से डिवाइड कर दो, परफेक्ट. 198 को 32 से डिवाइड कर दो, नहीं चलेगा. 194 को डिवाइड कर दो, 6 पॉइंट वर्क्स. सो 192 इज द ओनली नंबर. अगर 192 को मैं 8 is to 11 is to 13 में स्प्लिट कर रहा हूं, मतलब उसको कैसे स्प्लिट कर रहा हूं पता है, टोटल कितना होगा 32, मतलब ये 8 पार्ट्स होगा आउट ऑफ 32, ये 11 आउट ऑफ 32 और ये 13 आउट ऑफ 32, तो ये होगा 8 आउट ऑफ 32 आउट ऑफ 192, ये होगा 11 आउट ऑफ 32 आउट ऑफ 192, और ये होगा 13 आउट ऑफ 32 आउट ऑफ 192. So the first value is going to be 48, second is 66, third is 78. But उन्होंने एक रिलेशनशिप बोला है, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप, फर्स्ट एंड थर्ड की जो टोटल है वो बड़ी है किससे, सेकंड से. कितने से, 60 से. सो 48 प्लस 78 इज 126, बड़ा है 66 से by 60. Perfect, then that's going to be the answer. It becomes a tad lengthy, so definitely would not suggest. Option evaluation is a great idea अगर उन्होंने option में वो numbers दे दिए हैं तो. Is this clear? 3 questions in this attempt. We quickly go back to our table and tell them कि पहले attempt में, which is the June 23 in the old syllabus, had how many questions? 3. Now here I'm not making a note of the questions. I'm leaving it as a total of 3 because what I want at the end is how many questions and how do I analyze it. बोलो. हाँ, अगर सम नहीं होगा तो नहीं, अगर और कोई रिलेशनशिप दिए तो नहीं कर सकते. So in the past paper discussion table, if you want to write down the question numbers, go ahead. I'm only writing down the total. Is this here? So very quickly go back and script down the solutions. Any questions you have in the meantime, online wale drop them in the chat box, offline wale ask.
Now I will run through the rest of the papers very quickly, but what you are going to notice is yahi घुमा घुमा के मतलब you will see a word problem, you will see a mean proportional question, and you will see a duplicating duplicating question. This is what you will see in each and every paper. So this is going to be your prime focus area. Understanding word problems, and word problems may be almost every time they ask a word problem, it is a comparison. ये इससे कम है, ये इससे ज़्यादा है. That is the relationship that they give you. Do not waste time writing the questions, please. एक काम कर दो, बेल वाजो तो कर दो. Thank you. Last bench, मैडम स्कोर का शीट दिखा दो जरा. मतलब एक शीट देना फिर. Are you all done? Everybody's done writing question number 1 and 13. 18 का सेकंड पार्ट स्क्रॉल कर दूं. This is the second part to 18. Done? Can I? Chalo. Very quickly, moving on to paper number 2, which is the December 23, again in the old syllabus. Question number 1 itself is a duplicating question. So I don't think we really need to pay much attention to what the question is saying. But आप please लिख देना. Do not waste time writing the question though. The duplicate of. So duplicate of 3 is to 4 is 3 square is to 4 square, which is 9 is to 16. That is it. A is going to be the answer. Swiftly moving on. This is one of the most beautiful papers क्योंकि उन्होंने सब chapters एक साथ club करके लिख दिए हैं. So it becomes very easy to identify a chapter and answer the questions. There is no jumbling done in any way. Question number 2. Two numbers are in the ratio of 5:7. If the sum of the numbers is 192, then the greater number is. So they have not asked you the two numbers are. Do you notice that? क्यों? नहीं तो ऑप्शन इवैल्यूएशन कर लोगे आप रेशियो निकाल लोगे और देख लोगे कि दोनों का सम क्या है. So they said we are not giving you that choice. हम एक ही नंबर मांग रहे हैं तो हम ऑप्शन में भी एक ही नंबर दे रहे हैं. तो आप ऑप्शन इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, सॉल्व करना पड़ेगा. So step 1, two numbers. अब they have not named them in any way. So can I say एक बड़ा होगा एक छोटा and they're asking the greater. तो do you notice कि रेशियो 5:7 है, तो can I say पहला नंबर छोटा होगा और सेकेंड नंबर बड़ा होगा. तो let me write S for small and G for greater. So रेशियो क्या दिया है उनका रेशियो इज 5:7. तो उनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या है 5k and 7k. They have given you the sum and sum देते तो it becomes very easy. The sum is 192, which means that 5k plus 7k should be 192. 12k
is 192. What is K? 16. और अगर K 16 आ चुका है, then the two numbers are 5K and 7K. That's 5 into 16 and 7 into 16, which is 80. 112. उन्होंने मांगा क्या है? The greater number. Now be very mindful. They might not do this, but be very mindful of what they've asked and what you are ticking. ये भी हो सकता है कि वो ऑप्शन में 80 लिख दे, तो आप जल्दबाजी में 80 टिक मत कर देना. The answer they are asking is for the greater number, and that's 112. And like some time ago I told you, whenever they give you a sum, it's very easy to split the number. अगर टोटल 192 है, जिसको क्या रेशियो में स्प्लिट करना है? 5:7. तो टोटल 12 पार्ट में 5 पार्ट इधर और 7 पार्ट इधर. 5 पार्ट आउट ऑफ 12 आउट ऑफ द 192, 7 पार्ट आउट ऑफ 12 आउट ऑफ द 192. तो कहना है इसमें 80 होगा और इसमें 112, एंड दे आर आस्किंग यू फॉर द ग्रेटर नंबर, सो दैट्स 112. आइडियली इफ यू आर साउंड इनफ, ये सेकंड वाला कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ग्रेटर वाले पार्ट का कर दोगे तो भी चलेगा. इज दिस क्लियर? So that's question number 2 there. Moving on to question number 3. Another question which is very basic, very simple, और इतना simple है कि गलत लिख के आ जाते हैं. What does the question say? Question में बोला है कि 3 times A is 4 times B. तो A और B का रेशियो दे दो. सिंपल. 3:4. करेक्ट? गलत है. 3 times A is 4 times B बोला है ना. रेशियो अगर आपको चाहिए तो आप दो चीजें. नंबर 1, रेशियो चाहिए कैसा वो चेक कर. दे सेड द रेशियो ऑफ A's मनी टू B's मनी. तो A ऊपर B नीचे, विच मीन्स अगर मैं इसको घुमा दूं और A अपॉन B बना दूं तो ये 4 यही रहेगा, 3 नीचे चला जाएगा. सो द रेशियो ऑफ A's मनी टू B's मनी इज 4:3. इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. The mean proportional between 2 and 8 is a very simple question to answer. 2 और 8 का mean proportional क्या है? 4. But always remember plus या minus आ सकता है. तो when you write that down, plus minus लिख देना just in case options में होगा तो. Let's call it B. So 2B8. 2 और B को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो B का स्क्वायर होना चाहिए. B square is 2 into 8. 2 into 8 is 16. Taking square root, B is equal to plus or minus root of 16. B is equal to plus minus 4. But here they have only 4. So the answer is going to be 4. Is it clear? That's it. And I want to put some light on. एक डुप्लीकेटिंग का क्वेश्चन, एक मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन और 2 वर्ड प्रॉब्लम. Didn't I tell you that is what they will keep oscillating around? तो अब यही है, इसी के इर्द गिर्द 3 या 4 क्वेश्चंस. Let's come back to the table, and before we do anything, let's make a note. And the note is that in the December 23 paper, you asked 4 questions in ratio and proportion. Very quickly start writing. Any questions you have, ask.
Om, do you want an explanation for question number 3 or what? Anybody still writing? Shall we? We now come to the new papers. Ab, for weightage, technically you will look at the new papers and not the old. Why? क्योंकि नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करने के बाद जो वेटेज है वो असली वेटेज है. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Directly question number 16. And that also a word problem. What does the question say? The ratio of the salaries of two persons in a factory are 5:7. If the second person received 12,000 more than the first, the salary of the second person is. Can I say again? More or less, matlab comparison दिया. They are calling them first and second person. So let's call this first. Let's call this second. Ratio क्या दिया है? Ratio is 5:7. तो actual values क्या है? 5K and 7K. The salary of the second person is 12,000 more than the first. तो second person ज्यादा है. किससे ज्यादा है? फर्स्ट से. कितने से ज्यादा है? 12,000 से. तो अगर सेकंड पर्सन को मिल रही है 7K, तो 7K ज्यादा है 5K से. कितने से? 12,000 से. तो अगर 7K ज्यादा है 5K से, देन कैन आई से डिफरेंस कितना होना चाहिए? So can I say 7K minus 5K should be 12,000 or 2K should be 12,000, K should be 6,000. What do you want from me? You want the salary of the second person. Second person 7K kamata hai, which is 7 into 6,000, which is 42,000 is going to be the answer. This is not a question that you can option evaluate. होगा नहीं है. होने के लिए जो करना पड़ेगा उससे अच्छा खुद ही कर लो, वो बेटर है. Question number 17. Again another word problem. So this is where they skip asking mean proportional or duplicating, triplicating questions. A rope is of a length of 480 centimeters and it is divided into 4 parts whose lengths are 2, 5, 6 and 7. तो कहना इसे आपने 4 पार्ट में 2, 5, 6, 7 में रोप को तोड़ दिया है. What is the length of the maximum part? I've told you total दे दिए हो और parts दे दिए हो, so this becomes very easy. Typically अगर करना है तो first, second, third, fourth part का रेशियो क्या है? They've been broken into proportion of 2, 5, 6, 7. तो actual lengths क्या है? 2K, 5K, 6K, 7K. What is the total length? The total length is 480. तो 2K plus 5K plus 6K plus 7K करता हूं तो 480 आ जाना चाहिए. What is 2 plus 5 plus 6 plus 7? 28K. 20K is 480. What is K? 24. And if K is 24, they want the length of the maximum part. And what is the maximum part? 7. तो चाहिए तो सब निकाल लो या सिर्फ 7K का आंसर दे दो. What is 7K? Now the same question I told you, total दिए और रेशियो दिए हो तो ब्रेक करना बहुत इजी हो जाता है. अब यहां पे मैं सब नहीं निकाल रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. आपने 4 पार्ट में तोड़ दिया है. व्हाट आर द 4 पार्ट्स? 2, 5,
6, 7, 2, 5, 6, and 7. What is the total? So can I say this is 7 parts out of 20, but it's 7 out of 20 out of 480, and that is going to be 168. Is that an option? The answer is going to be D. Quickly moving on. 17, 18, 19, and 20. That's it. So how many questions? Let's quickly go back and make a note in the table. नए syllabus में we knew के number of questions would drop because of new chapters, but some chapters might not drop also क्योंकि सब chapters से छीनेंगे इसकी गारंटी नहीं है. Analyze. उन्होंने दो वर्ड प्रॉब्लम ही पूछ लिए. They did not ask mean proportional or they did not ask duplicating, triplicating. Anyway, write that down very quickly for me.
Moving on to the next, which is the December 23 paper, again in the old syllabus. Question in the new syllabus, sorry. Question number 1 itself. What does question number 1 say? The age of two persons are in the ratio of 4:3. If the age of the younger person is 8 years less than the other, then the age of the elder person is. Again, if you notice, the kind of word problem that they ask also remains the same. या तो total दिया है या फिर difference दिया है. That's it. So, दो लोग, what are they addressing them as? Younger and older, elder. तो अगर 4:3 है तो elder कौन है? Younger कौन है? So let's call this the elder and this is the younger. Ratio की बात करो, so the ratio is 4:3. तो actual values क्या है? 4k and 3k. If the age of the younger is 8 years less than the other, तो ये जो elder है और younger है, younger less है elder से, वो तो common sense है, younger छोटा ही होगा elder से, it's in the English there. कितने से? 8 साल से. यंगर इज 3k, एल्डर इज 4k. तो 3k छोटा है 4k से. कितने से? 8 से. तो अगर डिफरेंस लोगे तो जो बड़ा है वो आगे, छोटा वो पीछे. 4k माइनस 3k इज 8. k इज इक्वल टू 8. अगर k 8 है तो we want to know both. नहीं, they are only asking the age of the elder. Elder कौन है? 4k. तो can I say 4k is 4 into 8, which is 32. Do they have that as the option? That's going to be the answer B. Quickly moving on. 2 is a proportion question, variation question, sorry. 3 is a proportion question. What does the question say? The mean proportional between 0.2 and 0.05 is, B बोला दो उसको, 0.2 B and 0.05. So can I say it's B square is A into C. So B square is, what is 0.2 into 0.05? 0.01. So can I say B is plus minus root of 0.01? B is 0.01, and they don't want both as the answer. They only, sorry, 0. And they don't want both as the answer. They only want the positive value as the answer. So the answer here is going to be A. Question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Very quickly then, we go back to our table. In the table, we make a note. Kitne questions? 2. So in the new syllabus, 2 questions is what they are sticking to for now. Very quickly write that down for me. Any questions you have asked?
Very quickly, moving on to the next paper, which is the June 24. And this is the attempt where they asked a very good question, which technically looks like ratios, but it's actually a question from a section called mixtures. Now, what is mixtures? When you are mixing certain commodities in certain ratios, we call them mixtures. All eyes on the board, please. In a 30 liter of adulterated milk, the ratio of the volumes of milk and water is 7:3. What volume of water should be added to make the ratio 3:7? Let's understand the question first. 30 लीटर का अडल्टरेटेड मिल्क है आपके पास. व्हाट डू यू मीन बाय अडल्टरेटेड? इसमें मिलावट है. अब मिलावट के लिए क्या ऐड किए हो? मिलावट के लिए ऐड किया है पानी. करेक्ट. बट वो जो पानी ऐड किया है वो क्या रेशियो में है? द रेशियो इज 7:3. लूजली स्पीकिंग, अगर ये मिल्क एंड वाटर है, सो द रेशियो में ये मिल्क है और ये वाटर है, तो अगर 7 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी. 14 लीटर दूध है तो 6 लीटर पानी है, क्योंकि ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा. अगर 70 लीटर दूध है तो, एक मिनट, हैवंट दे टोल्ड यू टोटल सोल्यूशन कितना है? बोल दिया ना 30. तो 30 को तोड़ दो तो आपको फिलहाल कितना दूध कितना पानी है पता चल जाएगा. तो इफ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर currently is what? 7:3. The actual quantities are 7K and 3K. So if the actual quantities are 7K and 3K, total to 30 liter है. So can I say 7K, or rather let me write it this way, दूध और पानी को ऐड कर दूं तो 30 लीटर हो जाना चाहिए. दूध प्लस पानी is 30, which means 10K is 30, which means K is 3. अगर K 3 है, so the milk is 3K, which is 9 liters, and the milk is 7K, which is 21 liters, and the water is 3K, which is 9 liters. 21 और 9 टोटल कितना हो जाता है? Perfectly splits. That is not what they want. They didn't ask you कि फिर इसमें कितना दूध कितना पानी है. The question continues to say, what volume of water should be added for the ratio to become 3:7? वो चाहते कि रेशो घूम जाए. मतलब पहले 7:3 था, अब 3:7. तो डू यू नोटिस दूध कम हो रहा है, पानी बढ़ रहा है. करेक्ट. तो एक काम करो ना, 3:7. अगर दूध कम करना है तो ये जो दूध डाले हो वो निकाल दो उसमें से. निकाल सकते हो? Will you be able to remove the milk from it? That is not possible, because once the mixture is made, वो हो चुका है. You can't reverse it anymore. So what will you have to do? अब जो भी रिवर्सिंग चाहिए ना, वो या तो दूध ऐड करके होगा या पानी ऐड करके होगा. Whatever shifts you want to make will be by adding. Removal होना ही नहीं है. और ये सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है पानी और शक्कर के साथ. और 30 लीटर sugar solution has sugar and water in the ratio of 7:3. तो अब अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है ना, तो मैं नहीं बोलूंगा उबाल दो पानी और शक्कर बाजू में निकाल दो. नहीं कर सकते. अब अगर शक्कर बढ़ानी है तो शक्कर डालो, दूध बढ़ा पानी बढ़ाना है तो पानी डालो. पानी कम करना है ना तो शक्कर बढ़ाओ. आप पानी निकाल नहीं सकते. इट्स अ सॉल्यूशन. इट्स वन नाउ. You can't remove any one element. You want to change, you want to increase one, add it. You want to decrease one, add the other one. It will automatically decrease the other. तो अब हो क्या है? Do you notice आपको दूध कम करना है तो कॉमन सेंस है, सर दूध कम करना है ना तो पानी बढ़ाओ तो दूध कम होगा. आप दूध निकाल नहीं सकते. It's a solution. You can't separate the milk from the water. Great.
द रेशियो इन विच यू वांटेड टू बी इज 3:7। तो अगर दूध कम करना है तो पानी बढ़ा के होगा, और वो तो बोल ही रहे ना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड। आपको पानी ऐड करना है, कितना पानी है फिलहाल? फिलहाल आपके सॉल्यूशन में 9 लीटर पानी है, तो उसको बढ़ा दो। अरे वही तो बताना है कितने से बढ़ाना है, बोल दो एक एक्स अमाउंट ऐड कर देना। तो इफ आई ऐड एक्स लीटर्स ऑफ मिल्क, oh sorry, water, what will happen? पानी नाउ विल बिकम 9 प्लस एक्स। अब ये करने के बाद आपने दूध को हाथ नहीं लगाया, विच मीन्स द मिल्क इज स्टिल 21 लीटर्स, पानी बढ़ा दिया है। ये करने के बाद नया रेशियो क्या हो जाना चाहिए? 3:7। न्यू रेशियो इज 3:7। न्यू रेशियो किसका? मिल्क टू वाटर का। मिल्क को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया सर, वो अभी भी 21 लीटर है। पानी बढ़ाया हूं, 9+x कर दिया हूं, ये कितना होना चाहिए? 3:7। So can I say then 21 upon 9 plus x should be 3/7. Cross multiply 7 into 21 is 3 into 9 plus x. 7 into 21 is 147 is 27 plus 3x. 120 is 3x. X is equal to 40. 40 लीटर पानी बढ़ा दो, the ratio will flip and become 3:7. A very good question. This question is also asked saying same कर दो। मतलब फिलहाल क्या हो रहा है, दूध ज्यादा दिख रहा है पानी कम है, सेम कर दो दोनों को। अगेन सेम करना है ना, तो सेम करने के लिए कुछ ऐड करके ही सेम करना पड़ेगा। तो सेम करना है ना, तो पानी बढ़ाना पड़ेगा, कितने से? वही एक से बढ़ा दो। पर सर सेम कर दो मतलब क्या होता है? अरे रेशियो 1:1 होता है, जितना दूध उतना पानी। तो द न्यू रेशियो इन दैट केस विल बी अ 1:1 रेशियो। Is this clear to everyone? So beautifully put out question. Word problem again. Moving on to the next question, and that is question number 2. A very basic question asked. ये पहले पूछ चुके भी हैं, तो I am not going to dignify that with a response. I want you to finish it off. The mean proportional between 2 and 8 is 8 2s are 16, square root is 4. Question number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Can I say 2 questions asked? तो नए सिलेबस में दिख रहा है that they are consistently asking 2 questions. अब वो 2 questions क्या है? They've gone back. एक वर्ड प्रॉब्लम है, दूसरा मीन प्रोपोर्शनल है। I wanted to very quickly write that down for me. Any questions you have asked?
I have sent it on all channels, Fatima, and send it again. Chalo. Moving on to the next paper, and that is December 24 in the obviously new syllabus. The first question is a ratio proportion question, and it is literally a question that is picked out from our material. It is one of the first few questions that we do when we start ratios. Two numbers are in the ratio of 2:3. If 4 is subtracted from each, the new ratio becomes 3:5. What are the numbers? So two numbers. Now they have not named them. So let me call it first and second. Correct? What is the ratio given to them? 2:3. The actual values are 2k and 3k. If you subtract them by 4, so subtract 4, first number will become 2k minus 4, second 3k minus 4. What will happen to the ratio? New ratio will now become 3:5. Then can I say that 2k minus 4 is to 3k minus 4 is 3:5, or 2k minus 4 upon 3k minus 4 is 3:5. 5 times 2k minus 4 is 3 times 3k minus 4. 10k minus 20 is 9k minus 12. Take the k there, the 20 here. 10k minus 9k is 20 minus 12. K is 8. If k is 8, आपको चाहिए क्या? You want the numbers. तो दोनों नंबर चाहिए. Actual values, which is 2k and 3k. 2k, 3k, 2 into 8, 16, 3 into 8, 24. 16 और 24. Now this is one of those questions जहां पे ऑप्शन इवैल्यूएशन पॉसिबल है. अब क्यों है? बिकॉज दे सेड द नंबर्स आर. दोनों नंबर मांग रहे हो तो दोनों नंबर होंगे ऑप्शन में. तो यू कैन वेरी क्विकली इवैल्यूएट ऑप्शंस. ऑप्शन ए क्या है? 16, 24. ऑप्शन बी 4, 6. ऑप्शन सी 10, 15. एंड ऑप्शन डी 12, 16. टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. अगर इनका रेशियो 2:3 है, I don't know what 2:3 is. 2:3 is 2/3. And what is 2/3? 0.6667. कर दो. 16 divided by 24 क्या आता है? Perfect. What is 4 divided by 6? वही आता है. What is 10 divided by 15? ये भी वही आता है. And what is 12 divided by 16? ये नहीं चलेगा, पर ये 3 चलेंगे. What is my next condition? कि अगर दोनों से 4 subtract कर दूं, obviously numbers change हो जाएंगे. What will be the numbers? The subtraction of 4 will make this 12 and 20, 0 and 2, 0 and 2, 6 and 11. ये चेक नहीं करूंगा. New ratio will now become what? 3:5, which is 3/5, which is 0.6. What is 12 by 20? Perfect. 0 by 2 is 0. 6 by 11 is not 0.6. So can I say one that agrees is going to be A. So the answer to this is going to be A. That's question number 1, literally from our sheet. Question number 2. They again asked a mixtures question. I would really appreciate it if people keep quiet when I'm talking. What does the question say? How much pure milk in ml must be added to
300 ml solution containing 15% milk to make it 50%. It's literally the same question, बस ये परसेंटेज में लिख दिया है. अब क्या बोला है? 300 ml का सोल्यूशन है. किसका सोल्यूशन? मिल्क. अब मिल्क सोल्यूशन मतलब क्या? मिल्क इज मिल्क. व्हाट इज अ मिल्क सोल्यूशन? मतलब आपने उसमें कुछ मिक्स किया है. अब क्या मिक्स किया है ऑनेस्टली पता नहीं है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू से? पानी मिक्स किया होगा आपने. तो व्हेन आई से कि 300 ml का सोल्यूशन है जिसमें 15% मिल्क है, तो बचा हुआ 75 85, 85% पानी होगा. व्हाट इज 15% ऑफ 300? तो कैन आई से 45 ml मिल्क. जो बचा तो क्या बचा? 255 ml पानी. अब वो क्या बोल रहे हैं? हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड? हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड? मैं बोल दूंगा एक्स ऐड कर दो. एक्स ऐड करने के बाद ये 45 प्लस एक्स हो जाएगा. तो ये क्या होगा? ये तो 255 ही होगा. दिस आई एम नॉट चेंजिंग. ये करने के बाद दूध ज्यादा हो जाएगा आपके सोल्यूशन में. वो बोल रहे इतना ज्यादा हो जाए कि दोनों कितने हो जाए? कहना से 50-50% मतलब सेम होता है ना. आपको सेम करना है दोनों को, तो यू नो व्हाट, इक्वेट कर दोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा. या कॉमन सेंस है, 50-50 करना है ना. तो अगर पानी 255 ml है तो दूध भी कितना होना चाहिए? तो अब 255 करने के लिए कितना दूध ऐड करूं? 200 या फिर यू नो व्हाट यू विल से, ये ऐड करने के बाद 45 प्लस एक्स when taken a ratio with 255 should be 50 is to 50. 50-50. अब बोल के नहीं सर ऐसे कैसे, उन्होंने तो सिर्फ दूध का 50% बोला था. अरे टोटल 100% होता है ना. तो अगर दूध 50% हो रहा है तो पानी भी कितना होगा? 50%. सो कैन आई से 45 प्लस एक्स divided by 255 is 50 by 50, and we all know 50 by 50 is a 1:1 ratio, which means that अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 45 plus x is equal to 255. Take the 45 to the other side. X is 210. So how much milk needs to be added? 210 ml. That's question number 2. So they've asked a mixtures question. Then I would suggest कि mixtures के questions अच्छे से कर लेना. After this, I believe there is no other question. So they are sticking to asking how many questions? 2. Going back to your table and telling them कि दो question है. Done? Very quickly write that down for me. Any questions you have asked? लिखने का काम थोड़ा. Is it okay if I don't show you the question? चलेगा?
Now I want to very quickly do, let's say, a second bit here. What if they say कि 50% नहीं करना है दूध को, 60% करना है? तो नाउ रिमेंबर, रेशियो जब मैं बोलता हूं ना कि रेशियो ये हो जाना चाहिए, मुझे दोनों पार्ट्स बताने पड़ते हैं कि रेशियो ये चाहिए, तो फिर द न्यू रेशियो शुड बी सो एंड सो. बट जब मैं परसेंटेज बोलता हूं ना, तो मुझे दोनों की देने की जरूरत नहीं है. अगर मैं बोल रहा हूं दूध 60% होना चाहिए, तो फिर पानी कितना? तो कीप दैट इन माइंड कि ये 60-40 हो जाए. अगर मैंने 80% बोल दिया होता तो ये 80. एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? ग्रेट. दैट ब्रिंग्स अस टू व्हाट आई बिलीव इज द लास्ट पेपर, सबसे ताजा गर्मा गर्म पेपर, which is the June 25. The first question, not going to dignify that much with the response. What does the question say? The triplicate of 1:2 is, triplicate matlab cubing. So triplicate of 1:2 is 1 cube is to 2 cube, which is going to be 1:8. The answer is going to be 1:8. Question number 2. What does the question say? The ratio of two numbers is 3:4. Their product is 1452. The smallest between the two numbers is. So दो number है. Let's call them first and second. या फिर 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो smallest and largest, or if you want to call it greatest, is 3:4 ratio. अगर ये ratio है, then actual values are 3k and 4k. Their product is 1452. So smallest into greatest should be 1452. 3k into 4k is 1452, which is 12k square is 1452. K square is 1452 by 12 is 120. Then k is plus minus 11. But obviously यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है नहीं, तो पॉजिटिव ही होगा. तो k is 11. आपको चाहिए क्या? You want the smaller number. Can I say 3 is the smaller? So 3k, 3, which is 30. So the answer to that is going to be B, 33. Then there is question number 3. Now this is an interesting question, because they've mixed two things together. So pay attention. What does the question say? The sum of, sum चाहिए आपको किसका? The mean proportional between 1.4 and 35, and the third proportional to 6 and 9. तो आपको टोटल चाहिए. किसकी टोटल चाहिए? इन दोनों के मीन प्रोपोर्शनल की, एंड इन दोनों के थर्ड प्रोपोर्शनल की. सो आई विल रिपीट. द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 and 35 and the third proportional to 6 and 9. तो पहले इंडिपेंडेंटली फाइंड कर लेते हैं. अब इसका अगर मीन प्रोपोर्शनल मांगो हो, लेट्स कॉल इट बी. 1.4 b and 35. The product of the first and the last is the square of the middle term. So can I say b square is 1.4 into 35? What is b square? 49. Then what is b? Plus minus 7. But will be taking a positive 7. And the third proportional to 6 and 9. Mean proportional नहीं, 6 and 9 का third proportional. तो can I say उसको let's say x बुला लेते हैं. Then can I say इन दोनों का प्रोडक्ट इसका स्क्वायर है. So can I say 9 square is 6x? If 9 square is 6x, can I say 81 is 6x? Take the 6 to the other side. X is 81 by 6. What is x?
13 पॉइंट। आपको चाहिए इन दोनों का सम। यू वांट अ बी प्लस एक्स विच इज 7 प्लस 13.5 विच इज 20 ए। Quickly moving on to, I don't think there is another question. Is there? नहीं है? Let's not waste time then. 3 questions in this paper. Correct? What I want you to do is very quickly write down the solutions. And at the end of this now, we are going to do an overall analyzing of क्या क्या पूछा है।
On the board, everyone. Let's do a final analyzing of ratio and proportion. So the first thing that we are going to write down is how many questions in total. And when I do that, or when I want you to do that, do not count the first two papers. You will skip the first two papers and do the rest. So these two, I am going to write in a different color so that we don't mix the two up. Now, how many questions in total? 11, correct? And then below that, what are we going to expect from this chapter? Anywhere between 2 or 3 questions. What are these questions going to be? Mean proportional, duplicating, triplicating, word problem. And in word problem, what are you specifically going to see? Greater than, smaller than, and mixtures. Is this clear? Now, do I have to do everything? Yes. But this is your last minute revision. And you now know कि इतना कर लूंगा तो 2 या 1 क्वेश्चन तो definitely answer कर पाऊंगा. Now this I'm specifically talking to the ones कि sir मेरा 11th 12th maths नहीं है, मेरा बहुत difficult है, whatever that is. You now know the only area that you need to focus on. इतना कर लोगे तो the entire chapter is covered because almost 100% of the times this is what they've asked. A mean proportional question, a duplicating triplicating question, and one word problem. In the word problems, it is a ratio and total is given, it is a ratio and larger and smaller is given, or it is then a mixture question. Is this clear? Does anybody have any questions as far as ratio and proportion is concerned? Sure. Can we move on to the next chapter? We now go back to our basics book, where we are quickly going to cover a chapter called indices. So, stop talking. Nothing needs to be added to the ratio and proportion section. जितना लिखा था उतना बहुत है. So then let's come to the next chapter, that is indices. अब indices में क्या? The first and the very important thing, and that is laws of indices. And what is the important laws of indices? To begin with, if two numbers are multiplying and the bases are the same, the powers will add. If two numbers are dividing and the powers are the same, and the bases are the same, the powers will subtract. What if two numbers are multiplying but bases are not the same? Then powers need to be the same. Then you can bring them together and write them under a single power. What if two numbers are dividing and powers are the same, bases are not the same? Then you can bring them under a same power. I want you to make a mental note of this, that laws of indices are only and only valid जब numbers multiply या divide हो रहे हैं. Powers एक दूसरे के साथ सिर्फ तब और तब interact करती हैं when there is multiplication or division going on, or in other words, when geometrics is applied, arithmetics पे, addition subtraction पे कोई भी laws of indices applicable नहीं है. Now, this is what happens when you have two terms. What if you just have the one? What does that mean? What if you have one term and that is my voice low for everyone or is it only for one person? Can the rest of the people hear me? Well, Deepak, check if there is a problem at your end, and I will also see if there is something else that I can do. Now it is okay. Thank you. Chalo. Coming back to
व्हाट इफ इट्स अ सिंगल वैल्यू और उस पे लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करना है? व्हाट काइंड? नंबर वन, अगर एक्स रेज टू ए द होल रेज टू बी करते हो तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं? भिड़ जाएंगी, ए बी हो जाएगा, दे विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर। व्हाट इफ एक्स रेज टू ए है पर मुझे इसको नीचे लिखना है, देन दिस बिकम्स 1 अपॉन एक्स रेज टू माइनस ए, एंड रिवर्स, व्हाट इफ दिस इज एक्स रेज टू माइनस बी, तो मैं उसे 1 अपॉन एक्स रेज टू बी लिख सकता हूं। What if it's a power but it's a root, meaning x का bth root है ये, then in that case this will become x raised to 1 by b, आपकी रेगुलर पावर पावर के न्यूमरेटर में और आपका रूट पावर के डिनोमिनेटर में चला जाता है। then what if we have x raised to a का bth root, then this is x raised to a by b. After this, or rather by the end of this, ये छोड़ के और एक रूल इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज, अगर दो नंबर्स इक्वल हैं और उनके बेसिस भी इक्वल हैं, मतलब पावर्स इक्वल होने चाहिए। अगर दो नंबर्स इक्वल हैं, उनकी पावर्स इक्वल हैं, मतलब बेसिस भी इक्वल होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट standard rules. What are the standard rules? Anything, and by anything I mean any number raised to 0 is always 1. 1 raised to any number is always 1. 0 raised to any number is always 0. But also remember that 0 raised to 0 is not defined in mathematics. If you have this in place, पूरा chapter indices cover हो जाता है. Very quickly, write this down in your basics.
The question is 5 raised to 2x plus 3 and 5 raised to 3 minus x. Now ये क्वेश्चन थोड़ा तो इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ 5 नहीं 25 लिख देते तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता, बट देव आउटराइट रिटन 5, कुछ बचा ही नहीं है। दोनों वैल्यू इक्वल है, दोनों के बेस भी इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। सो दिस विल डायरेक्टली इंप्लाई दैट 2x plus 3 and 3 minus x should be the same. Take the x to the other side and 3 to the other side. 2x plus x is 3 minus 3. 3x is 0. So what is x? तो अगर x 0 हो जाएगा तो वो सेम हो जाएंगे। चेक, अगर मैं इसमें 0 डालता हूं, 2 into 0 is plus 3 is, तो ये 3 हो जाएगा। 3 minus 0 is, हो जाती है ना पावर्स इक्वल, which means that x is equal to 0 will make the powers the same. So the answer is C, 0. And if I am correct, I believe is the only question asked. No, there is one more, and that is question number 20. What does the question say? The question says 3 raised to x is 1 upon 243. Then what is the value of x square plus 4x minus 3? 3 raised to x is 1 upon 243. Now, this question does become a little more interesting than this because मुझे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर x 3 की पावर में है तो राइट भी 3 की पावर में होना चाहिए, तो उसको पहले वैसे लिखना पड़ेगा। सो दैट्स 3 raised to x is 1 upon 243। 3 की पावर है क्या, चेक कर लो पहले, कौन सी पावर, फिफ्थ पावर, तो ये 3 raised to 5 होगा। अगर मुझे यहां पर 3 raised to समथिंग लिखना है तो इस 3 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। देन कैन आई से 3 raised to x is 3 raised to minus 5? Can I say implies that x is equal to minus 5? If x is equal to minus 5, you want the value of x square plus 4x minus 5. That's minus 5 square plus 4 into minus 5 minus 5. Then can I say 25 minus 20 minus 5 will eventually become 0 when the value of this expression is 0. And now this is again where I want to focus on something, whether it was ratios or it is indices or this is your institute's approach. Question simple है ना, मैं तुझे ऑप्शन evaluate करने नहीं दे रहा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, तो मे बी मैं तुझे ऑप्शन इवैल्यूएशन के लिए दे दूं। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पर तो क्वेश्चन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर मैंने आपको सिर्फ x पूछ लिया ना तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी, एंड दैट इज व्हाई मैं चाहता हूं कि तू x ना दे, तो क्या दे, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दे। सो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो ऑप्शन नहीं इवैल्यूएट कर पाएगा। अगर मैं सिर्फ x मांग लेता तो आप ऑप्शन इवैल्यूएट कर सकते हो। So they go outright to make sure कि option evaluation possible now. You need to be very, very, very careful and you need to know how to solve questions. Solving आना चाहिए. Is that understood? That brings us to two questions in indices. So we go back to the table. Though line was ratio and proportion, indices is going to be the next two lines. The chapter is indices. How many questions? Two, but let me highlight them as red because we are not going to be using them later. Come back to the solution. Very quickly write this down. Any questions you have asked?
Directly moving to question number 14. What does the question say? The value of 64 raised to 5 by 6. Correct? Now, two ways of going about this question. Number one is using the laws of indices. 64 raised to 5 by 6 मतलब 64 को 5 से रेज करके उसका 6th रूट लेना है. One way of looking at it is अगर 64 का 6th रूट लेना है तो 64 किसी की 6th पावर होनी चाहिए. 64 किसकी पावर है? So you need to, if not know the powers, at least know कि कौन सा नंबर किसका पावर है. स्पेशली 2, 3 and 5, क्योंकि जो भी पावर्स देंगे ये इन तीन नंबर में से किसी ना किसी की होगी. 64 2 की कौन सी पावर है? 6th पावर है, रेज टू 5 by 6. A x raised to a, the whole raised to b becomes x raised to a b. 6 cancels. That becomes 2 raised to 5. And what is 2 raised to 5? 32 is going to be the answer. So, one solution could be 32, or one way of looking at it. What is the other way of looking at it? The other way of looking at it is using your calculators to do it directly. Your calculators are equipped to find any root given to you. So, step one, what we will do is, आपने मुझसे 64 रेज टू 5 by 6 पूछा, तो 64 का 6th रूट ले लेते हैं. कैसे? रूट साइन 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by what root do you want to take? 6th root. So divided by 6 plus 1 up into equal to 15 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. देख रहे हो? The answer is 2.0000, which means 64 का 6th root 2 है. अब इसको 5 से रेस करना है तो कर दो, इंटू स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, रेज टू 4 हो गया, रेज टू 5 हो गया. व्हाट इज द वैल्यू? 32.00, which is 32. Correct? So what we will first do is, let's write this down. So what I want you to do, for people who don't have this, we will write the process down first. And what is the process? Any root in calculator. Step 1, type the number. Step 2, press the root sign 15 times. Step 3, subtract 1. Step 4, divide by whichever root you want to take. Step 5, add 1. And step 6, press the into equal to combination 15 times. Write this down and then I will repeat the process for you.
Are you done? Anyone still writing? Shall we? Let's go back to the question. What does the question say? The question said कि हमें 64 का 6th रूट लेना है और फिर उसको रेज टू 5 करना है. सर उल्टा कर सकते हैं क्या? कैन वी फर्स्ट रेज 64 टू 5? यस, अगर कैलकुलेटर में बैठता है तो. कभी कभी नंबर इतना बड़ा हो जाता है कि आपको वो 10 डिजिट डिस्प्ले में बैठता नहीं है. बैठ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा कर देते हैं. 64 को पहले 5 से रेज कर देते हैं. 64 इंटू स्क्वायर क्यूब रेज टू 4 रेज टू 5. ये हो गया 64 रेज टू 5. अब क्या करना है? अब इसका 6 रूट लेना है. व्हाट इज द प्रोसेस? स्टेप 1, रूट साइन. कितनी बार? 15 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. डन. -1. उसके बाद एक सबट्रैक्ट कर दो. 6, so I will divide it by 6. इसके बाद रिवर्स. करेक्ट. उसके बाद वी विल हैव टू स्क्वायर इट. हाउ मेनी टाइम्स? 15 टाइम्स. 15 बार रूट लिया था, 15 बार स्क्वायर. तो 15 बार स्क्वायर करने के लिए इंटू इक्वल टू 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. The answer is 32.029. So can I say the closest it is? It's to 32. Is this clear to everyone? That was the first question there. The second question is again a very good question, and this question also is literally picked up from our material. What does the question say? 2 raised to x minus 1 plus 2 raised to x plus 1 is 80. Step 1 या रूल नंबर 1, दोनों के बीच ऑपरेशन क्या चल रहा है? दे कांट इंटरेक्ट विद ईच अदर. इन दोनों को अगर एक दूसरे से बात करनी है तो बीच का ऑपरेशन क्या होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन. एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं चलेगा. तो सर फिर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा. हाँ, एक साथ सिंप्लीफाई नहीं होंगे, इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं. मतलब ये 2 रेज टू एक्स माइनस 1 बनने से पहले कैन आई से ये था 2 रेज टू एक्स अपॉन 2 रेज टू 1, और ये 2 रेज टू एक्स प्लस 1 बनने से पहले था 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू 1 विच इज 80. 2 रेज टू एक्स कॉमन निकाल लो बाहर. अंदर क्या बचता है? ये हाफ और ये 2 इज 80. एलसीएम ले लेते हैं. 2 रेज टू एक्स इंटू 2 2 जा प्लस 1 इज 5 by 2 is 80. 2 raised to x is cross multiply 80 into 2 by 5. 5 ones are 5. 16s are, can I say 2 raised to x is 32.
अगर लेफ्ट इज अ पावर ऑफ 2, द राइट शुड ऑल्सो बी अ पावर ऑफ 2. तो अगर द लेफ्ट इज 2 raised to x, the right is 2 raised to 5. What is x equal to? Now, according to the institute, ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन. तो इंस्टीट्यूट ने मांगा क्या? x. तो दे दिए ना x की वैल्यू. What you can also do is directly substitute and check where LHS is equal to RHS. तो अगर मैं ऑप्शन ए ले लूं, ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू देम x is 8, तो कैन आई से 2 raised to 8 minus 1 plus 2 raised to 8 plus 1 हो जाता है, which is 2 raised to 7 plus 2 raised to 9. 2 raised to 7 is 128. 2 raised to 9 is 512. टोटल क्या होगा? 640. नहीं चलेगा, मुझे क्या चाहिए? तो डेफिनेटली नॉट डन. व्हाट इज योर नेक्स्ट ऑप्शन? हो सकता है यस, बट नेक्स्ट ऑप्शन 10 था. मैं ट्राई करता क्या? यू नीड टू बी स्मार्ट व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस. 8 डालने के बाद इतना बड़ा नंबर आया है, 10 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ना तो इससे भी बड़ा होगा. मुझे जो आंसर चाहिए ना वो उससे छोटा चाहिए. देन आई विल नॉट ट्राई द 10, I will try the 4. B4, if I substitute 4, doesn't that become 2 raised to 4 minus 1 plus 2 raised to 4 plus 1? That's 2 cube plus 2 raised to 5. That's 8 plus 32, which is 40. Isn't that right? Is that an option then? No. तो 8 बहुत बड़ा है, 4 बहुत छोटा है. Then can I say 10 तो definitely answer नहीं है. The answer has to be 5. Can you try the 5 and get me an answer? That is question number 17, 18, 19, and 20. That's that. How many questions there? 2 questions. Let's very quickly go back to the table and tell them second paper maybe दो ही questions थे of indices.
Very quickly then, moving on to the next paper, which is the June 23 paper in the new syllabus now. Question number 19 directly, nothing before that. And this also is a question that was literally in our material. What does the question say? 9 into 81 raised to x is equal to 1 upon 27 raised to x minus 3. So 9 into 81 raised to x is 1 upon 27 raised to x minus 3. They wanted to find the value of x. Sir, can we evaluate options? Yes. The options are also very small, so it will be easy to evaluate. But let me first solve it for you. अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए जो पावर में है, तो मेरे पास दोनों तरफ एक कोई सिंगुलर वैल्यू विद द पावर होनी चाहिए, तो मुझे वैसे बनाना पड़ेगा. 9, 81, 27 are all one common number, and that is सब 3 की पावर्स हैं. तो कैन आई से 9 is 3 square, 81 is 3 raised to 4, and that is raised to an x. 1 upon 27 is nothing else but 3 cube raised to x minus 3. In the next step, 3 raised to 2 into 3 raised to 4x is 1 upon, अगर ये पावर मल्टीप्लाई हो गई, so this is 3 raised to 3 into x minus 3. अब लेफ्ट में this is 3 raised to, numbers are multiplying, bases are the same, powers will and become 2 minus 4x. अब यहां पे this is in the denominator, अगर मैं 3 plus 4x, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके आ जाऊं तो ये पावर जो भी है उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव. सो कैन आई से दैट इज 3 raised to minus 3x minus 3. डन. दोनों नंबर इक्वल है, बेस इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए. इंप्लाइज 2 plus 4x is minus 3x minus 3. So 2 plus 4x is minus 3x plus 9. Take the 3x there, 2 there. 4x plus 3x is 9 minus 2. 7x is 7. X is equal to 1. So for an x is equal to 1, the LHS will be equal to the RHS. And you can also evaluate options. अगर 1 डाल दो, so that's 9 into 81 raised to 1. That's 9 into 81. And what's 9 into 81? 243 if I'm correct. Check कर लो एक बार. 729, sorry. 729. और अगर RHS देखूं तो it is 1 upon 2 raised 27 raised to x, which is 1 minus 3. That becomes 1 upon 27 raised to minus 2. That's 27 को अगर ऊपर लेके आ जाऊं तो 27 square. And what is 27 square? LHS and RHS tally. And I believe that's the only one question that has been asked in indices. So in the next paper, that's just the one question in indices. So 1 and start writing that one down.
Swiftly moving on to the next paper then, which is the December 23 in the new syllabus. For indices, we come to question number 11. It's almost exactly the same as the question that we did some time ago. There they had 5 in the base. Here they have 3. What does the question say? 3 raised to 2x plus 4 is the same as 3 raised to 3x. Values are equal, bases are equal, powers have to be equal. 2x plus 4 is 3x. Take the 2x to the other side. 4 is 3x minus 2x. Or can I say 4 is x? Or x is equal to 4. Check. If I put x is equal to 4, that becomes 4 2s are 8 plus 3s are 12. And 4 3s are 12. Can I say LHS does become equal to RHS? That's question number 11. And then we come to, is that it? That is the only one question asked. Fine then, just the one. Question number 11. Very quickly write that down for me, please. Shall we continue? Swiftly moving on to the next paper, which is June 24 in the new syllabus. We come to question number 11. A very interesting question that they asked in that attempt. Again, the pattern of the question is similar to what we've done before, but it needs a slightly different simplification. What does the question say? 300 raised to 8 is 65.61 into 10 raised to x. They're asking you to find the value of x. How do I do this? Well, simple. 300 में 3 है and 100 है. Correct? तो अगर लेफ्ट में 3 and 100 है तो राइट में भी 3 और 100 होना चाहिए. अब बोल के नहीं है सर 10 है. ग्रेट, 10 और 100 सेम ही है. बट ये 3 है क्या? चेक करना पड़ेगा. चेकिंग इफ दिस इज अ पावर ऑफ 3. आ जाओ अपने कैलकुलेटर्स में. 3 इंटू इक्वल टू करते जाओ. चेक करो 3561 बैठता है क्या उसमें? बैठता है, बट हमें ये डेसिमल हटाना पड़ेगा. तो वन स्टेप एट अ टाइम. Is it okay if I write this as 3 into 10 square, the whole raised to 8? Is it okay if I write this as 6561 upon 100 into 10 raised to x? Is that okay? In the next step, ये 8 अंदर आके दोनों को जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की साइन है. Can I say that's 3 raised to 8 into 3 raised into 10 raised to 16 is 6561. 3 की कौन सी पावर है? तो कैन आई से ये तो 3 raised to 8 ही हो जाता है अपॉन 10 स्क्वायर into 10 raised to x. In the next step, मुझे x की वैल्यू चाहिए.
तो सब भेज दो उस तरफ, सिर्फ एक एक्स रखो इस तरफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 raised to 8 into 10 raised to 16 divided by 3 raised to 8 into 10 square is 10 raised to x. 3 raised to 8, 3 raised to 8 cancels. So one unknown value is gone. बचता 10 है. अगर 10 बचता है, two values are multiplying, bases are the same, powers will add and become 18 is 10 raised to x. Values are equal, bases are equal, powers have to be equal, implies that x has to be 18. Is that an option? No, this is the kind of a question that I wouldn't suggest option evaluation. बहुत आ जाएगी. Because 18 जैसी पावर है, कैसे रिप्लेस करोगे 300 को या 10 को 18 से? That becomes too much to do. So here you need to know how to do the simplification. That is question number 11. Immediately next question. What does the question say? The question says 3 raised to x minus y is 27. 3 raised to x plus y is 243. They're asking you what is x equal to. Again, देखो उन्होंने क्या किया, x and y नहीं मांगा, सिर्फ क्या मांगा? क्योंकि x और y दोनों मांग लेता तो आप ऑप्शन डाल के इवैल्यूएट कर लेते ना. तो मुझे सिर्फ x चाहिए, बट कोई बात नहीं, we've done this. Let's begin. 3 raised to x minus y is, अगर लेफ्ट 3 है तो राइट भी 3 होना चाहिए. What is 27? 3 का cube. Then can I say implies that x minus y 3 है. Let's come here. 3 raised to x plus 5 is 243. What is 243? 3 की fifth power. Then can I say x plus y is 5? Can I now say इन दोनों को simultaneously solve कर सकते हैं? x plus y 5 है, x minus y 3 है, तो I can add the two, जिससे डायरेक्टली आपका x कैंसिल हो जाएगा. मैं साइन चेंज नहीं कर रहा, आई एम एडिंग, सीधा कैंसिल हो जाता है. तो ये क्या बचता है? 2x is 8. What is x? उन्होंने मांगा क्या है? The value of x. Great, then the value of x is 4. y भी मांगा होता तो हम x को सब्स्टिट्यूट कर देते, आ जाता. Can I say these are the only two questions there? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. So 2 questions in that attempt. Quick.
Very quickly, next paper is December 24, obviously in the new syllabus. अब 6 क्वेश्चन इसमें लेना है या क्वाड्रेटिक में इज ऑल्सो क्वेश्चन, इसमें लेते हैं फिर क्वाड्रेटिक में नहीं लेंगे। इज दैट ओके? Stop talking. What does the question say? If root of 3 raised to x is 81, then find the value of a. ठीक है, पहले तो x फाइंड करना पड़ेगा तब जाके a मिलेगा। अगेन डू यू नोटिस व्हाट दे डिड? बिकॉज ये सिंपल है, दे सेड x मत देना, क्योंकि अगर x दोगे तो मैं तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके बता सकता हूं। तो सॉल्व करके पहले x अलग से निकाल और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू दे दे। सो स्टेप 1 इज गोइंग टू बी, कैन आई से रूट 3 is nothing else but 3 raised to half raised to x? Can I say that root 3 is 3 raised to half raised to x is 3 raised to x by 2 is 81? अगर लेफ्ट 3 है तो राइट भी 3 होना चाहिए। कैन आई से 81 is 3 का फोर्थ पावर? Values are equal, bases are equal, powers have to be equal. X is equal to 8. If x is 8, then ax square minus 10x plus 16 is 0. So if x is equal to 8, then a into 8 square minus 10 into 8 plus 16 is 0. 64a minus 80 plus 16 is 0. 64a minus 64 आएगा ना? Can I say 64a is 64? A is equal to 1. The value of this is b, which is 1. Moving on to question number 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Again, another question which is literally from our material. What does the question say? The question says that if a by b raised to x minus 1 is b by a raised to x minus 3, तो उनको x की वैल्यू चाहिए। अब देखो दोनों वैल्यूज इक्वल हैं बट बेसिस इक्वल नहीं है। यहां बेस में a बाई बी है, यहां b बाई a है। सेम बनाने के लिए घुमाना पड़ेगा, घुमा दूंगा तो पावर नेगेटिव करना पड़ेगा। अब घुमाते वक्त दोनों को मत घुमा दें, खेलो मतलब खुद के साथ। एक को ही घुमाओ। a बाई b is x minus 1, b by a will be a by b, तो ये जो पावर x minus 3 है वो नेगेटिव ऑफ x minus 3 हो जाएगी। If two values are equal, bases are equal, then powers have to be equal. X minus 1 is negative of x minus 3. X minus 1 is negative x, positive 3. X here, 1 there. X plus x is 3 plus 1. 2x is 4. X is 2. Is that an option? Then I believe 20 should be the last question there, which means 2 questions in that paper as well. Very quickly, write that down for me, please. लिखने का काम जल्दी करो।
last paper, and that is June 25. Now, this was an attempt where they decided to again ask a question that is there in our sheet, but it is not one of your conventional questions. These are the kind of questions that student asks कि सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, पूछ लिया. And that is question number 12. And that is why I say, see, doing what you think will be most tasked is important, but also doing everything is also equally important, especially if you are aiming for that 80 plus or that 90 plus is what you are looking for. So, what does the question say? 2 raised to x is 4 raised to y is 8 raised to z. And if this is the relationship between the three, then what is the value of x? Now again, very intelligently, they did not give you the value of all three. क्योंकि अगर तीनों दे देता तो आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते. So they said हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए. So to begin with, if 2 raised to x is 4 raised to y is 8 raised to z, do you notice all three are technically the same numbers? What is that number? 2 is 2, 4 is 2 का square and 8 is 2 का cube. 2 is 2. This is 2 raised to 2y, 2 raised to 3z. Three values are equal, bases are equal, powers have to be equal. X is 2y is 3z. Now this now becomes kind of a ratios question. Indices का काम खत्म. So in the next step we are going to say ये तीनों equal है ना? If all these three are equal, let them be equal to the same value. And what is that value? Let's call it k. So x will be k directly, 2y will be k, and 3z will also be k. X will be k, y will be k by 2, and z will be k by 3. Once we have the values of x, y, and z, we go back and substitute them into the relationship that they've given us. 1 upon 2x, 1 upon 4y, 1 upon 4z is 4. 1 upon 2 into x, but x is k. 1 upon 4 into y, but y is k by 2. And 1 upon 4 into z, where y is k by 3, is 4. In the next step, 1 upon 2k, 1 upon 2 and 2 cancels, 2k. This is 1 upon 4k by 3 is 4. Denominator का denominator numerator में चला जाता है. So that's 1 upon 2k, 1 upon 2k, 3 upon 4k is 4. अब तीनों का ऐड करना पड़ेगा. तीनों का ऐड करने के लिए LCM लेना पड़ेगा. तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? 4k. So if 4k is the common denominator, can I say that 2k को 4k 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया, 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो what do you have? 2 plus 2 plus 3 is 7 by 4k. So if 7 by 4k is 4, cross multiply, k is 4 into 4 by 7, k is 16 by 7. But उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए x की वैल्यू, and x की वैल्यू is k. So if x is k, can I say x is 16 by 7? Is that an option? नहीं है? Do me a favor, someone. नहीं तो एक ही क्वेश्चन है.
It could be a typo also. Let me check first that and then reach. हाँ एक ही क्वेश्चन है. ठीक है, लिखना चालू कर दो. लेट मी चेक इट इज अ टाइपो फर्स्ट. क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? मैंने क्या गलत लिखा है? सॉरी. इज देयर अ मिस्टेक दैट आई हैव मेड? कहां पर 7/4? हाँ तो वो अच्छा सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. k देयर एंड 4 हियर. 7/4 into 4 is k. k is 7/60 बराबर है. Sorry about that. The answer is going to be D. 7/60. देखिए फटाफट. क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं. सो बड़े क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? यस. बट विल दे आस्क बिग क्वेश्चन फ्रॉम ऑल चैप्टर्स? नो. उनको टाइम एवरेज करना पड़ेगा. एलसीएम इज दैट नंबर जिसमें तीनों आ जाए. अब 4k ऐसा नंबर है जिसमें 2k भी आ जाता है, 2k भी आ जाता है, 4k भी आ जाता है. तो जब मैं 4k लिखता हूं, 2k को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 4k बन जाता है. तो अगर आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा. अगर आपने डिनोमिनेटर को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है तो न्यूमरेटर जैसा है वैसे रख सकते हो. इज दैट अंडरस्टूड यू? क्विक.
On the board, everyone. That was the last paper there. So, only one question. That's it. How many questions in total? 7. How many to expect? 1 minimum and 2 on the maximum. So, if at all I am going to look at indices, how many questions do I expect? 1 to 2. 1 being the higher probability of being asked. What do I expect? Usually the question that they ask is where you have to make the bases the same so that the powers become equal. If the question is a tad complicated, they do give you the privilege of evaluating options. But last attempt, they asked a question which technically used to be old syllabus ka. Old syllabus, I mean not your syllabus. I mean the old syllabus matlab when they used to ask a descriptive paper. डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता था 4 मार्क का व्हाट दे आस्क्ड इन दी एमसीक्यू दिस टाइम सो नेवर से नेवर पूछने के चांसेस हैं बट एनीवे यू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट इंडाइसेस इज सो वेरी क्विकली व्हाट आई आल्सो वांट टू डू इज लॉगरिथम्स के रूल्स कर लेते हैं like the entire chapter of indices depends on the laws of indices. The entire chapter of logarithms depends on log rules. On the board, everyone. Log rule number 1. Log of A into B to some base x is log A to the base x plus log B to the base x. Logarithms changes multiplication to addition. Log of A by B to the base x is log of A to the base x minus log of B to the base x. Logarithms changes division to subtraction, and log of A raised to B to the base x. Logarithms has the power to bring down the power, becomes B log A to the base x. Almost 90% of questions are covered only and only by these 3 log rules. अब ये छोड़ के और क्या पता होना चाहिए? The standard log rules. And what are the standard log rules? The standard log rules are, number 1, if you have log of a number and the base is the same, the answer is always 1. If you are asked for log of 1, no matter what the base is, the answer is 0. The log of 0, no matter what the base is not defined in logarithms, and log of negative values to the base x is also not defined in logarithms. अब ये छोड़ के this sometimes require, or we sometimes require, very rarely though, but I still want to write them down, is what does logarithm actually mean? Like when I say that log of A to the base B is C, also known as the logarithmic relationship between A, B, and C, shifting to exponential, when B is raised to the value C, I get a value equal to A, also known as B raised to C is A, also known as the exponential relationship between A, B, and C. And apart from that, one last rule, and that is also called the change of base theorem. What does the change of base theorem say? That if you are asked the log of A to the base B and you do not like the base B, change it and write it as log of A divided by log of B. What will the base be now? It can be whatever you want it to be. Just remember, whatever it is in the numerator, same base has to be in the denominator. Correct? अब ये छोड़ के, if you want to find logs of numbers to the base 10, you can do that in your calculator. So log
2 base 10 in Calci has the same rules. Step 1 is type the number. Step 2, root sign 15 times. Step 3, minus 1. And the only step that changes is step 4, and that is you divide by a number, and that is 0.000070 to 71. This, if you have in place, everything in logarithms will be covered. Start writing down, please.
Let us very quickly begin with questions in logarithms. Let's go back to the first paper. Question number 5 is a very basic log rule question or standard logarithm question. What does the question say? Log of 1 to the base 10 is always and always. 1 ka log, no matter what the basis, is always 0. Question number 6. The log of 16 to the base 0.5. Now, this is an interesting question and can be done in different ways. Method number 1. देखो, whenever they ask you a log, तो logarithm होता क्या है? बेस का पावर होता है. तो जब आप मुझे log of 16 मांगते हो ना, तो बेस में नंबर ऐसा हो जो 16 बन सकता है. अगर ये 2 होता ना, तो आंसर वाज वेरी इजी. 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16. तो 2 को 4 से रेज कर दो तो वो 16 बन जाता है. तो इसका आंसर 4 हो जाता. व्हाट इफ ये 4 ही था बेस, तो मैं सीधा बोल देता 4 का स्क्वायर 16 है, तो इसका आंसर 2 है. प्रॉब्लम ये है ना कि यहां 0.5 दिया है. अब 0.5 को रेज करते जाऊंगा तो वो कभी भी 16 बनना नहीं है. 0.5 को रेज करते जाऊंगा तो कोई डेसिमल में छोटा छोटा होते जाएगा. But the beauty of the number 0.5 and 16 is, या फिर the beauty of 5 and 2 is, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. कैसे? 1/2 क्या होता है? बन गया ना 25. एंड 1/5 क्या होता है? What is 1/5? 0.2. So you notice how 2 को 5 and 5 को 2 बना सकते हैं. And because 2 को 5 and 5 को 2 बना सकते हैं, we can use this to our advantage. मतलब ये जो 0.5 है ना, is nothing else but 0.5 is 5/10, which is 1/2. And isn't that 2 raised to -1? Yes or no? Correct? So can I say this is nothing else but log of 16 to the base 2 raised to -1? Can I say this is log of 16 is 2 ka 4th power and 0.5 is 2 raised to -1? And then remember, we had done a log rule, and that log rule said कि अगर आपके पास log of x raised to a है and y raised to b है, तो ये a न्यूमरेटर में बाहर आ जाता है और ये b डिनोमिनेटर में. This is nothing else but a by b log of x to the base y. तो ये 4 न्यूमरेटर में बाहर आ जाएगा, -1 डिनोमिनेटर में बचता है log 2 to the base 2. But what is log 2 to the base 2? 1. So can I say that's 4/-1 into 1? Then can I say the answer is -4? So this is -4. And the answer to that is -4. The second way of going about this is, why don't we use the change of base theorem? But why are we doing that? क्योंकि हमें कैलकुलेटर में करना. तो सर सीधा कैलकुलेटर में ही कर दो ना. हाँ, बट कैलकुलेटर में करने के लिए आपका बेस 10 ही होना चाहिए और कोई भी बेस नहीं चलेगा. रिमेंबर दिस. तो इसको हम log 16 डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.5 लिख सकते हैं. सर अब बेस क्या है? 10. क्योंकि मुझे 10 से कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस पॉसिबल है.
Now will you do the calculation? This is my suggestion. Memory clean कर देना. Come to a very fresh calculator calculation. Always start with the denominator. पहले ना 0.5 का log ले लो. Root sign 15 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minus 1. Divided by 0.000070271. ये हो गया log of 0.5. हो गया. Add that to memory m plus. उसको memory में बैठने दो. आ जाओ न्यूमरेटर पे 16 का log ले लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minus 1. Divided by 0.000070271. ये हो गया न्यूमरेटर का लॉग. अब न्यूमरेटर के लॉग को डिनोमिनेटर के लॉग से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देते हैं. डिवाइडेड बाय recalling the memory equal to, and the answer is -4.000. And can I say the answer is -4? Does that work? Yes. Is this clear to everyone? And I have seen and I will show you. एक दो तीन बार पूछा है log value निकालने के लिए, तो उसके लिए कैलकुलेटर कैलकुलेशन काम आएगा. Anybody wants me to repeat this? Step 1 मेमोरी क्लीन कर देना. Step 2 इतना याद रखना कि आप log only to the base 10 ले सकते हो. I'm going to repeat this again. आपका कैलकुलेटर logs to the base 10 लेता है, तो दूसरा कोई भी बेस हो ये काम नहीं करेगा. तो पहले चेंज ऑफ बेस करके बेस चेंज कर लेना. log of 16 to the base 0.5 will be written as log of 16 divided by log of 0.5. और अब दोनों का बेस क्या होगा? 10 and 10. Clear? Can I? In the next step, we are now going to go to the calculator. Start with the denominator. Denominator में क्या है? 0.5. तो पहले 0.5 का log. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minus 1. Divided by 0.000070271. This is the denominator's log. आ गया? Yes. Add this to memory m plus. आ जाओ न्यूमरेटर में 16. रूट साइन 15 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minus 1. Divided by 0.000070271. यह क्या न्यूमरेटर का लॉ. अब इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कर दो बाय रिकॉलिंग द मेमोरी. एमआरसी प्रेस करके इक्वल टू प्रेस कर देना, आपको आपका वैल्यू आ जाएगा. Is this clear to everyone? The answer to this is a -4. That was the second question there. मुझे नहीं लगता दो से ज्यादा पूछे होंगे. Is there any other question in log there? नहीं है? Great. Let's go back to our लिखना चालू कर दो, फिर वापस एक बात दिखाता हूं. Let's go back to your table. Two questions. जिनका हो गया लिखना चालू कर दो. जिनको एक और बार कैलकुलेशन चाहिए, मेमोरी क्लीन कर देना. प्रेस AC in your calculator. Come to a clean screen. पहले तो रिमेंबर, यू कांट टेक लॉग्स टू द बेस 0.5. आपका कैलकुलेटर इज नॉट इक्विप्ड टू डू दैट. यू कैन ओनली टेक लॉग्स टू द बेस 10. तो पहले चेंज ऑफ बेस एंड देन हमेशा डिनोमिनेटर से शुरुआत. 0.5 का लॉग लेना है. रूट साइन 15 टाइम्स.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minus 1. Divided by 0.000070271. ये हो गया log of the denominator. इसको मेमोरी में ऐड कर देना. Come to the numerator. 16 root sign 15 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minus 1 divided by 0.000070271 equal to क्या आ गया न्यूमरेटर का लॉग. अब इसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से जो आपने मेमोरी में सेव किया है. डिवाइड recall memory equal to, and that's going to be your answer. Start writing quickly. Moving on to the next paper, December 23, but in the old syllabus. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Again a question जहां calculator काम आ सकता है, but we'll do both. We will see how to solve it, and then we will come to how to do it in the calculator.
What does the question say? The value of 2 plus log of 0.01 to the base 10. So 2 to 2 is a regular number, correct? You want the value of this to the base 10. The previous question also, there was one more way of going about it, but I said already 2 is enough. There is one more. देखना है क्या? Yes. I go फटाफट. Remember how I told you that 0.5 is actually half? So why not write it as log of 16 to the base half? अब 16 और 2 में कॉमन क्या है? 2. Why can't I change the base and say this is nothing else but log of 16 to the base 2 divided by log of half to the base 2? Correct? Now ऊपर 16 का log तो मिल ही गया. क्यों? 16 2 की कौन सी पावर है? 4. तो ये सीधा 4 हो जाता है, खत्म. डिनोमिनेटर ना पहले log of a by b रूल अप्लाई करना पड़ेगा. So can I say this is nothing else but log of 16 to the base 2 divided by log 1 to the base 2 minus log of 2 to the base 2. बराबर ना? Log of a by b is log a minus log b और दोनों का base 2 है. Correct? Now it's only simplification. 16 का log to the base 2 4 है क्योंकि 16 2 की चौथी पावर है. 1 का log is always 0 and 2 to the base 2 is 1. Then can I say that's 4 upon minus 1? That's minus 4. There's one more way of going about it, but I think that's pretty much enough. You get it? If your log rules are, the basic log rules are in place, घुमा के कैसे भी निकाल सकते हो. So similarly, here also there are multiple ways of going about it. एक तो कैलकुलेटर से कर ही सकते हो. यहां पे मेथड नंबर 1 वुड बी, ये जो 0.01 दिख रहा है ये 10 बना सकते हो ना इसको. कैसे? Isn't this 1 upon 100? Yes or no? एंड अगर ये 1 upon 100 है तो अगेन या तो 1 upon 100 लिख के चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई कर दो और फिर उसको ऊपर ले लो, या फिर कैन आई से इसी को दिस इज 1 upon 10 स्क्वायर विच इज 10 raised to minus 2 है. तो अगर वैसे लिख दूं isn't this 2 plus log of 10 raised to minus 2 to the base 10? Isn't that 2 plus log of a raised to b is b log a? What is log 10 to the base 10? So minus 2 into 1 हो जाता है ये. Can I say that's 2 minus 2, which is method number 1? I show you another one. And the other one is ये 2 है plus log of 0.01. अगर ये log होता ना तो ये एक दूसरे के साथ भिड़ जाते. करेक्ट? यहाँ बेस क्या है? Is it okay अगर मैं 2 को log of 100 to the base 10 लिख दूं? गलत है कि सही है? क्यों? log of 100 to the base 10 is 2 ही है ना. 110 की दूसरी पावर है प्लस log of 0.01 to the base 10. Can I say log a plus log b is log of a into b? What is 100 into 0.01? 1. And what is log of 1? 0. Bus log rules need to be in place. Can we do this in the calculator now? Luckily for us, ये already 10 है तो मगजमारी नहीं है. बस इसकी वैल्यू निकाल के उसमें 2 ऐड कर देना. Come to a fresh screen, come to a fresh calculation. 0.01. रूट साइन कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by 0.000070,271. हो गया? अब इसमें करना क्या है? इसमें 2 ऐड करना है प्लस 2. मेरे इसमें एरर आता है बिकॉज ई आता है बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर. आपके इसमें 0.000 समथिंग आया हो, आता है ना? सो द आंसर टू दैट इज गोइंग टू बी 0. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी क्विकली राइट दैट डाउन फॉर मी प्लीज.
अच्छा 1 मिनट, इज दिस दी ओनली क्वेश्चन? एक ही है कि और कुछ है? जस्ट द वन? तो आ जाओ फिर टेबल में भी एंट्री कर देते हैं। जस्ट द वन क्वेश्चन। स्टॉप एंड ऑन द बोर्ड। फटाक से नेक्स्ट पेपर पे चले जाते हैं। दैट इज द June 23, again in the old syllabus. A beautifully put question. It's such a basic question that the answer is a straight giveaway.
and that is, the question is log of 3 to the base x plus log of 9 to the base x plus log of 729 to the base x is 9. और अब पूछ रहे हैं कि x क्या है. x बेस में, डू यू नोटिस ये पूरा एक साथ होके लॉग निकल जाता है. तो अगर लॉग निकल जाता है तो क्रिस्प वैल्यू मिलना चाहिए ना. इफ यू नोटिस 3 9 729 की क्रिस्प वैल्यू कब मिलेगी, जब बेस में क्या हो, 3 या 3 की पावर होनी चाहिए. अब ऑप्शन में देखोगे ना तो सिर्फ 3 है ना. द आंसर इज 3. 3 टू द बेस 3 is 1, 9 to the base 3 is 2, 729 to the base 3 is 6. 6 2 1 9. करेक्ट. So what do we have to solve it? तो solve कर दो. log of a plus log of b plus log of c अगर ऐड हो रहा है तो एक साथ लाके क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं. to the base x is 9. then the log of what is 3 into 9 into 729, 1968. 3 to the base x is 9. Then can I say log of a to the base b is c, implies that b raised to c gives me the value a. x raised to 9 is 19683. पर एक मिनट, कौन से नंबर की 9 पावर 19683 होगी. अगेन उसके लिए ये क्लियर होना चाहिए आपका कि ये सब 3 की पावर है. तो 3 raised to 9 is 19683. So if 3 raised to 9 is 19683, x raised to 9 is 3 raised to 9, x has to be equal to 3. Any way you look at it, final answer will be 3. Very quickly, is that the only question? Yes, 8 नहीं, 8 डिफरेंशिएशन था. उसमें लॉग दिखता है बट इट्स अ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन. डन. Only one question. Quickly start writing down.
Moving on to the next paper, into the new syllabus. The first paper is going to be the June 23 पेपर. अच्छा ये हो चुका है क्या? December 23. Question number 12 and question number 13. Two questions asked. What does the question say? Log of 7 to the base 10 is A. What is the log of 1 upon 70 to the base 10? और ये ना ये amalgamation जो हम कर रहे हैं, छोटा मोटा जो हम कर रहे हैं, and because I'm somebody who teaches foundation, inter and final, we are going to do a chapter in inter called learning curve, जिसमें logarithms use होगा. तो all the students that say क्यों पढ़ाया log, क्यों लेने के लिए पढ़ाया, इंटर में आप पता चलेगा. एंड ये जो छोटे मोटे अमलगमेशन है ना, ये वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट अज्यूम करता है कि आप करके आए, तो पता होना चाहिए. तो इंस्टीट्यूट कभी भी ना आपको जो चाहिए वो लॉग देती नहीं है. मतलब आपको चाहिए होगा लॉग 70, इंस्टीट्यूट देगी नहीं, इंस्टीट्यूट लॉग 7 देगी. आपको चाहिए होगा लॉग 6, इंस्टीट्यूट देगी नहीं, इंस्टीट्यूट लॉग 2 एंड लॉग 3 देगा, बोलेगा तू अपना 6 बना ले. आपको चाहिए होगा लॉग 72, इंस्टीट्यूट नहीं देगा, इंस्टीट्यूट 6 3 2 देगा, बोलेगा तो अपना log 72 बना ले. And for you to be able to do that, you need to understand how to bridge the gap between what I want and what I have. Now currently what you want is 1 upon 70, what you have is 7. Then you need to make sure that you break this down into 7. But in logarithms एक फायदा होता है, यही क्वेश्चन इंडाइसेस में होगा ना तो 7 ही बनाना पड़ता है, क्योंकि एक ही वैल्यू है मेरे पास 7, तो 7 ही दिखना चाहिए सब जगह. लॉगरिथम्स बोलता है जरूरी नहीं है, लॉगरिथम्स बोलता है बेस क्या है 10, तो तू दो नंबर में तोड़ सकता है, एक है 7 और दूसरा है 10. क्यों? क्योंकि उसका लॉग देने की जरूरत नहीं है, वो तो 1 ही होगा. तो तू इसको 7 एंड 10 पे तोड़ के लिख, जहां जहां log 7 आया वहां a लिख देना, जहां जहां log 10 आया वहां 1 लिख देना. How will I write this? In the next step, I will say this is log of 1 upon 7 into 10 to the base 10. अब रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स कैसे टूटेगा ये? log of a upon b into c. न्यूमरेटर वाले लॉग्स पॉजिटिव लिखोगे, डिनोमिनेटर वाले लॉग्स नेगेटिव. तो दिस विल बी log 1 टू द बेस 10 पॉजिटिव, 7 नीचे है ना, तो माइनस log 7 टू द बेस 10 नेगेटिव, एंड अगेन log 10 to the base 10 negative. So this will be 0, this will be a, and this will be 1. So the answer to this is minus a minus 1. Let's look at what they have. ऑप्शन में कहीं भी माइनस ए माइनस 1 नहीं है, बट ये देख रहे हो बाहर नेगेटिव निकाल के लिखा है, तो हो जाएगा ना. बाहर अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालू तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस है ना तो उल्टा सीधा भी लिख सकते हो. कैन आई से इसे 1 प्लस ए लिख देंगे हम. So this is a negative of 1 plus a. Isn't that also the same? Or negative of 1 plus a? Immediate next question is also logarithms. And this is also an interesting question, क्योंकि if your basic understanding of logarithms is in place, तो ये बिना कुछ लिखे orally भी हो जाता है. कैसे? They are asking you that log to the base 2 of, log to the base 3 of, log to the base 2 of x क्या है? 1 है. तो उस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? log to the base 2 of, log to the base 3 of, log to the base 2 of x is 1. तो देखो अगर ये x फाइंड करना है ना, मैं ऑप्शन इवैल्यूएट कर लेता हूं. द बेस्ट इज ना, इसमें से कोई भी नंबर परफेक्ट पावर में बैठता ही नहीं है. ये किसी की पावर नहीं है, ये किसी की पावर नहीं है, और ये किसी की पावर नहीं है. इसलिए तीनों में से आंसर हो ही नहीं सकता. ये क्वेश्चन कंफ्यूज करना ही था ना, तो इधर 64 128 256 ऐसा कुछ लिख देता ना 2 की पावर्स में, तो भी हो जाता, क्योंकि द x हैज टू बी अ पावर ऑफ 2. उसके बिना ये 1 को रिड्यूस नहीं होगा.
तो अगर ये x 512 है तो 512 2 की कौन सी पावर है? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। तो कहने से ये पूरा 9 हो जाता है। 9 3 की कौन सी पावर है? सेकेंड पावर, तो ये 2 हो जाता है ना। एंड 2 2 की कौन सी पावर है? परफेक्ट, टैली हो जाता है। फिर आंसर 512 होना चाहिए। अब बोलेंगे हाँ हाँ तू तो कर ही लेगा, सॉल्व करके बता। कर देते हैं। अगर सिंप्लीफाई करना है तो अंदर से बाहर आओगे, अगर सॉल्व करना है तो बाहर से अंदर जाना पड़ेगा। तो वी विल से वी विल से ये लॉग ए है, दिस एंटायर थिंग इज ए, टू द बेस बी इज सी। If log A to the base B is C, then B raised to C will give you A, or in other words, 2 raised to 1 will give you log to the base 3 of log to the base 2 of x. एक log निकल गया। That's the idea. एक 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 करके log हटाते जाओ till you reach the x. उल्टा करके लिख दो। This is log to the base 3 of log to the base 2 of x is 2। वापस वही, इसको x अज्यूम कर लो। तो log of a to the base b is c, b raised to c will give you a। This is 3 square is log of x to the base 2। घुमा के लिख दू तो log of x to the base 2 is 9। Last but not the least, 2 raised to 9 is x, 2 raised to 9 is x, so x becomes 512। But I would also suggest option evaluation कर लो, फटाफट आंसर आ जाता है। I'm giving you a few minutes to type this down for me, please. Any questions you have in the meantime, ask. Having said that, 2 questions in this chapter, or rather in this paper. Let's go back to our discussions and 2. Quickly start writing down.
चलो, quickly moving on to the next. Quickly not moving on to the next. Can I? Chalo. Those were 2 questions in that paper. Moving on to June 24. Obviously, new syllabus. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Literally almost the same question. What does the question say? Log to the base 2 of log to the base 3 of log to the base 2 of x is 0. करेक्ट. अगेन शुरुआत कहां से हो रही है? तो ये नंबर ना 2 की पावर में होना चाहिए. Now you know what they've done? सब नंबर 2 की पावर में बैठते हैं, which then makes it interesting. अगर मैं 1 से चालू करूं तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि log 1 to the base 2 0 हो जाएगा, तो ये खत्म है क्योंकि 0 का log ले नहीं सकते. तो 1 is definitely not the answer. 2 से चालू करूंगा तो 2 भी यही खत्म हो जाएगा बिकॉज log 2 to the base 2 1 हो जाएगा. log 3 log 1 to the base 3 0 हो जाएगा और फिर ये एंड वाला log नहीं निकलेगा. तो आंसर या तो 8 होगा या 16. लेट्स स्टार्ट विद 8. log of 8 to the base 2 is 3. log of 3 to the base 3 is 1 and log of 1 no matter what the base is 0. So आंसर क्या होना चाहिए? But like we solved the previous question, we will solve this as well. Log of a to the base b is c. B raised to c gives me a. So that's 2 raised to 0 is log to the base 3 of log to the base 2 of x. In the next step, log to the base 3 of log to the base 2 of x is 2 raised to 0, which is 1. Log a to the base b is c. So b raised to c is a. 3 raised to 1 is log of x to the base 2. घुमा के लिखता हूं. Log of x to the base 2 is 3. 2 cube is x. If 2 cube is x, what is x? 8. The answer to that is 8. That's question number 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Just the one. फटाफट come back to your table और लिख दो logarithms का एक question in June 23, June 24 and very quickly write down the solution please. लिखने का काम please जल्दी जल्दी करो.
Anyone still writing? Let's very quickly come to the December 24 paper. Question number 12. What does the question say? Log of b to the base a plus log of c to the base a is 0. Then what is the relationship between b and c? Log of b to the base a plus log of c to the base a is 0. Log a plus log b is log of a into b to the base a is 0. And now can I say by the exponential rule, if log of a to the base b is c, then b raised to c is a, or in other words, a raised to 0 is bc. But what is a raised to 0? 1 is b into c, and they want b on one side, c on the other. The only way that is possible is 1 upon c is b, or b is 1 by c. Is that an option? The answer to that is going to be B. B is 1 by C. Question number 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Just the one question, and that is in the December 24 paper. Write that down quickly for me. आ जाओ quickly then. Let's come to the last. वो एक ही था ना? Let's come to what I believe is the last paper. Question number 9. It's exactly the same question. Not going to dignify that with the response. So just putting it there. And that's about it, I guess. So do not need to write down anything. Just enter it into the table. And that's one question. How many in total? 6 questions in total.
What do I expect out of this chapter? 1 to 2 with a very high probability only one question. What do I expect? Value find करने वाले questions. Log of a plus b, log of a plus log of b, log of a minus log of b वाला formula and exponential to logarithmic form wala formula. These are the values that you will expect. Done. Let's move on to the next chapter. And the next chapter that I want to do is progressions, also known as APGP. A chapter which I believe is very, very, very simple. Also, the kind of questions that they ask, they keep it very simple. There are questions asked on 3 levels, whether it is an AP or a GP. All eyes on the board, please. Progressions. If you're talking about an arithmetic progression, the set of questions that are asked are on number 1, term of an AP. The nth term of an AP is A plus n minus 1 into D. Correct? If you ask me the second, then it's the sum of an AP. It is n by 2 2a plus n minus 1 into D. And the same SN formula can be used if you know the first and the last term, and it's n by 2a plus L. अब ये छोड़ के the next kind of question is that if A, B, C are in AP, अगर आप मुझे बोल दो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, then by default ये जो बीच का नंबर है ना B, ये A and C का एवरेज है, ये A and C का अर्थमेटिक मीन है, which implies that ये जो B है ये A और C का एवरेज लेके मिलेगा. The last is if you tell me that 3 terms are in AP, तो मेरा assumption for the 3 terms will be बीच का term A, आगे वाला A plus D, पीछे वाला A minus D. And if you ask me the same, ये बहुत rare होगा, पर अगर पूछा 4 terms are in AP, तो हम बीच का टर्म ए अज्यूम नहीं कर सकते हैं, बीच का टर्म ओपन रख के ए प्लस डी और ए माइनस डी करना पड़ेगा. बट अब यहां से यहां इज नॉट अ 1D जंप, इट्स अ 2D जंप. तो यहां से यहां भी 2Ds का जंप होगा, तो ये प्लस 3D हो जाएगा और ये माइनस 3D हो जाएगा. On exact same lines, exact meaning literal same lines. If the same thing is asked in GP, it's literally the same set of questions but with a few changes here and there. अगर GP में question पूछा तो GP में they ask you term, and term of a GP is A into R raised to n minus 1. What about sum of a GP? The answer is, what is sum of a GP? Very good. Correct. What is sum of a GP? A into R raised to upon exam लिखिए पहला. This is if R is greater than 1 or absolute value of R is greater than 1. But if छोटा हुआ तो A 1 minus R raised to n upon 1 minus R. वैसे it doesn't matter, but lastly, if you tell me ABC is a GP, तो ये जो B है ना, ये A and C का geometric mean हो जाता है, not arithmetic mean. And lastly, if 3 terms are in GP, तो बीच का A, आगे वाला A into R, पीछे वाला A by R. और वही अगर 4 टर्म इन GP बोल दो तो ये A, ये AR, ये पीछे A by R,
एक और आगे वाला ए आर क्यूब और एक और पीछे वाला ए बाय आर क्यूब. इज दिस क्लियर एवरीवन? वेरी क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस प्लीज. बहुत ज्यादा देखते हैं.
Now this, if you ask me, is one of the easiest chapters. The questions that they ask in this are, I will run through, which we will obviously see, and somewhere between 3 to 4 questions, जिसमें से 2 AP, 2 GP होते हैं usually, and the questions asked are also very simple. To begin with, the first paper, question number 4. What does the question say? 28x and 7 are in GP. Then what is the value of x? अगर x बीच में है तो वो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल होता है. So 28x 7. Then can I say that 28 into 7 is x का square, or I can say x is the mean proportional or the geometric mean of 28 and 7. Then what is x? 28 into 7 is uska square root 14. So the answer is going to be plus or minus 14a. Question number 8. The question says 2a minus 1, a minus 2 and a plus 5 are in AP. Then what is the value of a? Agar 2a minus 1, a minus 2 and a plus 5 are in an arithmetic progression, then the middle term is the arithmetic mean between these two, which means a plus 2 is nothing else but 2a plus 2a minus 1 plus a plus 5 divided by 2. Cross multiply 2 times a plus, sorry, a minus 2. Very good, ध्यान दे रहे हो, चेक कर रहा था मैं. A minus 2 is 2a minus 1 plus a plus 5. Plus है ना, so it doesn't really matter. Brackets open हो सकते हैं. 2a minus 2 is 2a minus 1, या फिर इसको यहां समेट लेता हूं. a plus 2a is 3a plus 4. Correct? The 2a will go to the other side, 4 will come here. 4 negative हो जाएगा. Negative 4 is 3a minus 2a. Negative 8 is a, or a is equal to a negative 8. Moving on to the, आ जाएगा इसमें, आप खींच लो राइट, मेरे अंदर छोड़ो. हाँ, if you want to, you can evaluate options also. वैल्यूज डाल दो और चेक कर दो कब एपी बनते हैं. डालने के बाद एपी बनते हैं तो एपी है, नहीं तो नहीं है. 0 डाल दोगे तो ये बन जाता है -1, -2 एंड 5. -1, -2, 5 आर नॉट इन एन एपी. इन दोनों के बीच 1 यूनिट का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 7 यूनिट का डिफरेंस है. अगर मैं -6 डाल दू तो -6 into 2 is -12, -1 is -13. This will be -6 minus 2 is -8, and this is going to be -1. इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस नहीं है, 7 का है. अगर मैं -8 ले लेता हूं, चलो, so that's 8 2 is 16, negative, -1, -17, ये -10, and this is -3. 17 से 10 is 7, and -10 to 3 is also 7. So this does become an AP. Anyway, swiftly moving on to question number 10, 11, 12. What does the question say? The product of 3 terms in GP is 512. मिडिल टर्म बता दो. लिखा था हमने ये 3 टर्म जीपी में होगा तो बीच वाला ए, उसके आगे वाला ए बाय नहीं ए आर, और पीछे वाला ए बाय आर. ये 3 टर्म जो है उनका प्रोडक्ट 512 है.
तो अगर प्रोडक्ट 512 है तो ए बाय आर इंटू ए आर 512 होना चाहिए. कैन आई से आर आर कैंसल्स. ए क्यूब इज 512. 512 किसका क्यूब है? 8 का. तो ए मिल गया 8. पर एक मिनट, उनको तो मिडिल टर्म चाहिए. करेक्ट, मिडिल टर्म ही है ना. आंसर इज सी, ए. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 15. What does the question say? The nth term of an AP is 7n minus 5. So nth term matlab Tn is 7n minus 5. The sum of the first 20 terms is. 20 टर्म ऐड करने बोल रहे हो. 20 टर्म ऐड करने के लिए अपने पास ए होना चाहिए, डी होना चाहिए. एन तो आपने बता दिया. अब ए और डी कहां से आएगा? आपने टीएन दे दिया ना. आपने तो टेक्निकली सीक्वेंस ही दे दिया है. अगर मैं T1 फाइंड करूं तो इट इज 7 into 1 minus 5 which is 7 minus 5 which is 2. अगर मैं T2 निकालूं so that's 7 into 2 minus 5 that's 14 minus 5 which is 9. और अब आगे जा सकता हूं पर कोई जरूरत नहीं है. आपको A मिल गया 2 एंड आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया 7. अगर आपका n 20 है, आपको सम चाहिए फर्स्ट 20 टर्म्स का. Sn is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So Sn, which is S20, is 20 by 2, 2 into 2 plus 20 minus 1, which is 19 into d, which is 7. This is 10 into 4 plus. What is 19 into 7? 133. 133 plus 4 is going to be 137. So that's 1370. Is that an option? Yes, that's going to be A, 1370. That's question number 15. 16, 17, 18, 19 and 20. So 4 questions there. Correct? अब ठीक से देखोगे ना ये 4 क्वेश्चन. जीपी, जीपी, 2 जीपी, एपी एंड एपी. तो 2 जीपी 2 एपी. जहां 3 पूछेंगे ना वहां पे 2 जीपी 1 एपी या 2 एपी 1 जीपी होगा. दैट इज द पैटर्न दैट दे फॉलो. 4 क्वेश्चंस, 2 जीपी 2 एपी प्रोग्रेशन. 4 क्वेश्चंस. Very quickly write that down for me. और यही होगा. All papers you will see is terms and sums and 3 terms are in AP या 3 terms are in GP. यही questions होंगे. रहने दो, ये दिख रहा है सबको? नहीं, नौजवान को दिखना चाहिए. Quick.
That was the first paper. Moving on to the second, which is December 23 in the old syllabus. Like I said, they will have questions in chunks. So this was the first four were ratio. The next two are mathematics of finance. The next set is AP, GP. Starting with question number 17. 7, sorry. What does the question say? The missing term in the AP is dash 13 dash 3. One step at a time. ये वाला टर्म इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा. So it's going to be dash 13 dash 3. इन दोनों का अर्थमेटिक मीन is going to be 13 और 3 का AM. 13 plus 3 is divide by 2. Done. Let's come to the next. अगर मुझे पहला वाला टर्म जानना है तो कैन आई से इसको अगर मैं ए बुलाऊं तो ए और 8 का अर्थमेटिक मीन 13 होना चाहिए. तो a plus 8 divided by 2 13 होना चाहिए. 2 goes to the other side and multiplies. 8 plus 8 is 26. So a is 26 minus 8, which is 18. तो ये कितना होना चाहिए? 18. Correct? So the answer is 18, 13 and 8, 3. Correct? This is what we also call y marke satara. There's a quicker way of going about it. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10. तो बीच में एक नंबर होगा तो डिफरेंस 5 होना चाहिए. तो 5 के डिफरेंस पे प्लेस करते जाओ. 3 से 5 is 8, 8 से 5 is 13 and 13 से 5 is 18. खत्म. या फिर दोनों नंबर्स प्लेस कर दो. कौन सा फ्लो इन एन एम is going to be the AP, otherwise it's not going to be an AP. That is question number 7. Very quickly going to question number 8. The 8th term of the series. इस सीरीज का उनको 8th term चाहिए. अब did they say कि ये सीरीज AP है या GP है? No. So our first job is to figure out whether it's an AP or a GP. अब देखते ही फेस वैल्यू पे पता चल जाता है कि ये क्या है? GP है. पर फिर भी अगर आपको चेक करना है ना तो 256 plus 64. What is 256 plus 64? Divide that by 2. क्या आता है? 16. नहीं चलेगा. 128 चाहिए था. तो ठीक है, 256 into 64 कर दो और स्क्वायर रूट ले लो. क्या आता है? परफेक्ट. तो ये जीपी है ना. अगर ये जीपी है और मुझे इसका एक टर्म निकालना है तो डू यू नोटिस आधा आधा होते जा रहा है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, एक्चुअली निकालने की जरूरत नहीं है, खुद से भी निकाल ही सकते हो. 256, 128 एंड 64. ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां. अगर मैं कंटिन्यू करते जाऊं, 64 का आधा 32, का आधा 16, का आधा 8, का आधा 4, आधा 2. सो द एट टर्म इज 2. और व्हाट यू कैन आल्सो डू इज, क्योंकि ये एथ टर्म पूछ रहे तो मैंने कर दिया. अगर 18th पूछ लेते या 16th पूछ लेते तो नहीं कर सकता, फाइंड करना पड़ेगा. हाउ विल यू डू दैट? A here is 256 and common ratio ना half है, आधा है. Now for convenience sake you can also write it as 0.5. It's up to you how you want to write it. We will say that the nth term of the progression is AR raised to n minus 1. So the 8th term of the progression is A R, which is half, raised to n minus 1, which is 7. और 0.5 लिख सकते हो तो 0.5. It's up to you. T8 is 256 into 7. 1 raised to 7 is 1. क्योंकि 1 raised to anything is 1. 2 raised to 7 is 128. 128 ones are 128 twos are
T8 is 2. The answer to that is anyway 2. That is the second question there. Third is question number 10. What does the question say? The sum of n terms of the series 1, 3, 9, 27 is 364. Find the value of n. तो कितने टर्म ऐड करके 364 आता है ये बताना है. तो what will we do is पहले तो फिगर करना पड़ेगा is this an AP or a GP. Now because they said series, कौन सी series है ये नहीं पता है. Again the same 9 plus 1 10 divided by 2 is 5. नहीं चलेगा तो ये AP नहीं है. GP के लिए चेक करते हैं. 9 into 1 is 9 और उसका स्क्वायर रूट 3. तो कहने से GP है. तो अगर ये GP है then A here is 1 and the common ratio is 3. ट्रिपल होते जा रहा है ना. आपने बोला sum up till the end term is 364. So sum up till the end term is A r raised to n minus 1 upon r minus 1. Nth term tak sum is 364. A is 1. R is 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1. 3 minus 1 is 2. So 364 is 3 raised to n minus 1 upon 2. What is 364 into 2? 728 is 3 raised to n minus 1. 1 goes to the other side. 729 is 3 raised to n. If 3 raised to n is 729, we know that 729 is the which power? Sixth power. So can I say 3 raised to 6? Can I say implies that n has to be 6. So it's the sixth term. Square करके आपको क्या मिलता है? 364 मिलता है. That's going to be question number 10. Quickly checking for more. Question number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and how many questions did we see? 3. AP, GP, and GP. So 2 GPs and 1 AP in the table. Next वाले पेपर में 3 questions थे. Quickly write down any questions you have, ask.
GP. So 1, 3, 9, 27 is a geometric progression and it adds up to 3 to 8, 0. A here is 1. The common ratio is 3 क्योंकि ट्रिपल करते जा रहा है. And sum up till the nth term is 3 to 7, 3 to 8, 0. So can I say the sum up till the nth term is A r raised to n minus 1 upon r minus 1. So I will say 30 to 80 is equal to A, which is 1, and r, which is 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1. So that's 3280 is 3 raised to n minus 1 upon 2. What is 3280 into 2? 656 is 3 raised to n minus 1. 6561 is 3 raised to n, or 3 raised to n is 656. So 3 raised to n is 3 raised to 8. N has to be equal to. So you basically added 8 terms of this progression to get where you've gotten to. Question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. The question says that A, B, C are in an arithmetic progression. So if A, B, and C are in an AP, what do they want from you? What is A minus B upon B minus C equal to? ये AP में है, तो कोई भी 3 random numbers assume कर लो that are in AP. Can I say let A be 1, B be, C be 3? So can I say A minus B upon B minus C is 1 minus 2 upon 2 minus 3. That's minus 1 upon minus 1, which is 1. A is going to be the answer. 16, 17, 18, 19, and 20. That's that. How many questions? 2 questions. How were they asked? Can I say 1 GP, 1 AP? They stick to that balance. So in the new syllabus, the number of questions are lesser comparatively. So the number of questions is 2 in the first paper. Quickly write this down for me.
चलो, quickly moving to the next paper. December 23. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then immediately 7 as well. The seventh term of an AP 2, 5, 8, 11 is. To be very honest, एक तो AP है, बोल दिया, चेक करने की जरूरत नहीं है, और सातवां ही टर्म मांग रहे हैं, 4 तो दे ही दिया आपने, करेक्ट? तो 5, 6 और 7, 3 ही तो टर्म आगे जाना है, खुद ही दे ही देते। 2 के बाद 3, 3 और फिर 3, सो 3 से बढ़ते रहना पड़ेगा। 14, 17, C should be the answer. A here is 2, common difference is 3. The seventh term Tn is A plus n minus 1 into D. T7 is 2 plus 7 minus 1 into 3. T7 is 2 plus 6 into 3, which is 18. T7 is 20. Immediate next, which is question number 8. The eighth term of the series. अब बोला नहीं है series क्या है, तो the first step is figuring out whether it's an AP or a GP. So let's do that first. We have 128, 64, 32 and so on. आपने eighth term मांगा है. Can I say 3 दे दिए हो? All we require is how many more? 5 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्या लॉजिक से जा रहा है ये? आधा होता जा रहा है. 32 का आधा, 16 का आधा, 8 का आधा, 4 का आधा, 2 का आधा. Can I say the answer has to be 1, or you can put it into the formula. A here is 128. Common ratio is half, which is also 0.5. अब पिछला क्वेश्चन मैंने हाफ लेके किया था, ये वाला 0.5 लेके कर देता हूं. The nth term is AR raised to n minus 1. So the eighth term is A, which is 128, R, which is 0.5, raised to n minus 1, which is 8 minus 1. T8 is 128 into 0.5 raised to 7. In your calculators, 0.5 को 7 से raise कर दो. Multiply that by 128. 1 आ जाता है. Is what we were expecting anyway. That was the second question. And I believe those are the only 2 questions. ये दो छोड़ के और कुछ APGP में खास है नहीं. So we stop, very quickly go to the table and tell them कि 2 question पूछे थे. And write that down without talking.
Very quickly then, moving on to the June 24 paper. Question number 6. The sum of the first 50 natural numbers is. Now you can look at this in different ways. You can look at this as standard progression. Standard progression is the sum of the first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. This is where I want to stop and I want to go back to the basics. Standard sums लिख लेते हैं. The first is 1 plus 2 plus 3 right up till n, also known as sum of n, also known as sum of first n natural numbers, which is nothing else but n into n plus 1 divided by 2. उसके बाद आता है 1 square plus 2 square plus 3 square right up till n square. It is the sum of n square. It is the sum of first sum of squares of first n natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Last but not the least, 1 cube, 2 cube, 3 cube, right up till n cube is the sum of n cube, is the sum of the cubes of first n natural numbers, which is n into n plus 1 divided by 2 the whole square. Very quickly write these three standard sums for me.
चलो, going back to the question. So you have two options: treat it as the sum of natural numbers or treat it as an AP, क्योंकि sum of natural numbers is also an arithmetic progression. So you want the sum of the first 50 natural numbers. Sum of n is n into n plus 1 divided by 2. That's 50 into 50 plus 1 divided by 2. That's 50, or rather divide करके 25 into 51 लिख देता हूं. What is 25 into 51? 127. So the answer to that is going to be A. Question number 6. Question number 7, 8. What does question number 8 say? If the product of the first three terms of a GP is 64, then the middle term is product of three terms बोला है, तो three terms will be GP में तो A, AR and A by R. Product is 64, मतलब A by R into A into AR is 64. R and R cancels. A cube is 64. A is the cube root of 64, which is 4. Correct? So the answer to this is going to be 4, क्योंकि ये middle term है और वो 4 है. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That's it. Two questions there. And I want to repeatedly say, maintaining a balance, 181 GP. Very quickly write that down.
आ जाओ फटाफट to the next paper, which is the December 24 paper. Question number 8. What are the questions here? The seventh term of an AP minus 20, minus 60, minus 12 is minus 20, minus 16, minus 12. Can I say already 3 term दे चुके हो? 4, 5, 6, 7. 4 ही टर्म चाहिए और तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूं. अब ये देख रहे हो इंक्रीज होते जा रहा है 4 से. तो अगर 12 नेगेटिव को 4 से इंक्रीज करूंगा, -8, -4, 0 and then +4. C is going to be the answer. If not, what I could also do is say A here is a -20 and what is the common difference. अब अगर लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो. ऑलवेज रिमेंबर नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म. तो अगर डिफरेंस जानना है तो -16 माइनस -20 करना पड़ेगा. तो कॉमन डिफरेंस इज -16 प्लस 20. तो डिफरेंस क्या आएगा? 4. I will now say that you want the 7th term. So n7 होगा. Tn is a plus n minus 1 into d. The 7th term is a plus n minus 1, which is 6 into d, which is 4. T7 is minus 20 plus 24. T7 is 4. The answer to this is C, 4. Question number 9. What does the question say? The first term and common ratio of a GP are 4.5. Find the fifth term. Very easy. पांचवा टर्म चाहिए आपको. 1, 2, 3, 4, 5. फर्स्ट टर्म क्या है? 4 और कॉमन रेशियो इज हाफ. मतलब आधा होता जाएगा. 4 का आधा, 2 का आधा, 1 का आधा, आधे का आधा, quarter. So can I say the answer to that is B? 1/4, also known as a quarter. अगर यही क्वेश्चन फॉर्मूला लिख के करना है, उन्होंने बोला फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन रेशियो इज हाफ, और उन्होंने कौन सा टर्म मांगा? पांचवा. द फिफ्थ टर्म, कैन आई से Tn इज a plus n minus 1 into d. The fifth term is 4 plus 5 minus 1, which is 4 into, sorry, GPA here. Tn is AR raised to n minus 1. So T5 is 4 into half raised to 5 minus 1. T5 is 4 into half raised to 4. T5 is 4 into 1 upon 2 raised to 4, which is 16. For 1s are, for 4s are 16. T5 is 1 by 4. So the fifth term is 1 by 4. Either way. Question number 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. That's pretty much it. Again, 2 questions. And again, 1 AP, 1 GP. So, 2 सवाल. Quickly start writing. I'm again going to ask. I hope this is going at a speed that you can catch up, and I hope people are benefiting in some way out of this.
आ जाओ quickly then to the last paper, and that is the June 25 paper. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The number of terms to be taken so that 1 plus 2 plus 4 plus 8 becomes 8191. Pehle to, you've not told me whether it is an AP or a GP, but can I say evident hai that it is a GP? क्यों दिख रहा है डबल होते जा रहा है? तो A here is 1 and common ratio is 2. Sum add करके 8191 आ जाना चाहिए. Then can I say that the sum up till the nth term is A r raised to n minus 1 upon r minus 1. The sum up till the nth term, which is 8191, is 1 into 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. In the next step, 8191 is 1 into anything is the same value, 2 raised to n minus 1 upon 1. 1 cross multiplies, 8191 into 1 will remain 8191. 1 goes to the other side and adds 8192 is 2 raised to n. अगर आपका लेफ्ट 2 की पावर है तो राइट भी 2 की पावर होना चाहिए. चेक 8192 2 की कौन सी पावर है? 1 3 13 power. So this is 2 raised to 13. Can I say implies that n equals 13? The value of n is A, 13. Question number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Can I say that's just the one question? एक और है 6 है. Question number 6 is a word problem. What does the question say? A person saves ₹1 on the first day, 3 on the second, 5 on the third. पहले दिन ₹1, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 5. What is the saving on the 20th day? Now यहां पे ना मैथ्स नहीं इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? What is the saving on the 20th day and what is the saving of the 20 days? जमीन आसमान का फर्क है. 20th डे की सेविंग मतलब उस दिन कितना पैसा गया ये मांग रहे. 20th डेज की सेविंग मतलब पूरे 20 दिन की टोटल मांग रहे. तो एक में टर्म मांगते हैं और एक में सम. आपको क्या लगता है इसमें क्या मांग रहे हैं? क्योंकि व्हाट इज द सेविंग ऑन द 20th डे बोला है. ऐसे नहीं बोला व्हाट इज द सेविंग ऑफ 20 डेज, ये नहीं बोला. तो कहना ऐसे टर्म मांगी है. अब 20 है तो निकाल तो सकते हो, आपके ऊपर है, मैं नहीं निकाल रहा. A here is 1, the common difference is 2 and n is 20. The nth term is A plus n minus 1 into d. The 20th term is 1 plus 20 minus 1 into d, which is 2. The 20th term is 1 plus 19 into 2. The 20th term is 19 into 2 is plus 1. So the 20th term is going to be 30. That is question number 6. बस ये दो ही थे. Great. Again 1 AP, 1 GP.
2 questions. So that's it. So before you all start writing, let me wrap up the chapter. How many questions in total? A perfect 10. How many do I expect? A perfect 2. ओल्ड सिलेबस में पूछ रहे थे अच्छे खासे, न्यू में नहीं, परफेक्टली एंड परफेक्टली 2. एंड वेरी सिंपल, सॉरी, एंड परफेक्टली एक एपी होगा, एक जीपी होगा. दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. इज दिस क्लियर? ग्रेट. वेरी क्विकली राइट दैट डाउन. We very quickly move into the next chapter, and that is simple and compound interest. So, like APGP, this chapter also has 2 parts. One is simple interest and the other is compound. Now, pre-COVID or in the old syllabus, सिर्फ simple compound interest था. अब in the new syllabus, there is also annuity. So, to begin with, mathematics of finance, the first thing is simple interest. अब simple interest में क्या क्या पूछ सकते हैं? Number 1, interest. So if they ask simple interest, the answer is PNR upon 100, or the same formula is also written as PNI. अगर 100 incorporate करके लिखने वाले हो तो I, बिना 100 का लिखने वाले हो तो I. Next, the amount on simple interest is basically the principal into 1 plus NR upon 100, or the same formula is principal into 1 plus NI. However you want to write it. अब ये छोड़ के सिंपल इंटरेस्ट में डबलिंग ट्रिपलिंग क्वेश्चंस होते हैं. थोड़ा डबलिंग ट्रिपलिंग क्वेश्चंस कि अगर मैंने पैसा डाला है और वो डबल हो रहा है, पैसा डाला है तो वो ट्रिपल हो रहा है, तो मुझे ना एक ही चीज चाहिए, और रादर मुझे एक दे दो तो मैं दूसरा दे दूंगा. आप पीरियड दे दो तो मैं रेट दे दूंगा, आप रेट दे दो तो मैं पीरियड दे दूंगा. तो आई गिव यू एन एग्जांपल एंड वेरी क्विकली डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट. अगर मैंने पैसा डाला है बैंक में और वो x टाइम्स हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय x टाइम्स? डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है, 5 टाइम्स हो गया है, x टाइम्स हो गया है, तो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस NR अपॉन 100. बट अमाउंट हैज बिकम x टाइम्स द प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस NR अपॉन 100. डू यू नोटिस PP कैंसिल हो जाता है, बिकॉज द डबलिंग ट्रिपलिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ आपने क्या वैल्यू रखी थी. 1 goes to the other side, x minus 1 is NR upon 100, cross multiply x minus 1 into 100 upon R is N, or we can say that the number of years in which the money becomes x times itself is given by the number of times it is minus 1 upon R into 100. I also like to remember this formula verbally in textual format, and that is number of years is equal to number of times minus 1 upon the rate into 100. Now this is pretty much it about simple interest. We then move on to compound interest. In compound interest, again the basic formulas. The only difference is compound interest में पहले interest नहीं आता, पहले amount आती है. An amount is P into 1 plus I raised to N. Similarly, compound interest अगर चाहिए होगा तो it is P into 1 plus I raised to N.
-1। अब इसमें ना डबलिंग ट्रिपलिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर डबलिंग ट्रिपलिंग या जनरलाइज्ड फॉर्मूला, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द, कौन सी रूल्स, 72 रूल एंड द 114 rule. What does the 72 rule say? The 72 rule says that money doubles in n is equal to 72 by r years. This is when the money is doubling, principal is becoming twice itself, then n is 72 by r, and the 114 rule says कि अगर पैसा ट्रिपल हो रहा है then the period and the rate are related as 114 by r. अब ये छोड़ के कंपाउंड इंटरेस्ट में there isn't much left to do and maximum questions you will see तो इसी पे होंगे, simple and compound interest. अब ये छोड़ के when you talk about a concept called non-annual compounding. What do you mean by non-annual compounding? जब आप compounding more than once a year करते हो, अगर आप एनुअली नहीं, अगर आप सेमी एनुअली या 6 मंथली या सेमेस्टर वाइज करते हो, मतलब साल में 2 बार, अगर आप क्वार्टरली करते हो साल में 4 बार, अगर आप मंथली कंपाउंड करते हो तो साल में 12 बार, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इन दैट केस अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आई बाई के रेज टू एन के, एंड इन दैट केस कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस I by k minus 1 the whole raised to n k. This is what happens to the simple and the compound interest. गलत लिखा क्या मैंने? हाँ, n k minus 1. What is k? K is the compounding factor. K is 1 जब एनुअल कंपाउंडिंग होता है, केस 2 जब सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होता है, केस 4 जब क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, एंड केस 12 जब मंथली कंपाउंडिंग होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी. तो अगर आप फ्यूचर वैल्यू की बात करो बट एक एन्युइटी की, एन्युअली अगर आप पैसे बार बार रेकरिंगली डाल रहे हो, मतलब 10 साल के लिए आप एक बार पैसे डिपॉजिट करके 10 साल बाद विड्रॉ नहीं कर रहे हो, आप हर साल डिपॉजिट करते जा रहे हो, इन दैट केस वी कॉल इट एन एन्युइटी, अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर एवरी पीरियड एट अ फिक्स्ड टाइम. व्हेन दैट हैपेंस देन the future value is given by PP, which is the periodic payment, divided by I into 1 plus I raised to n minus 1. और वही अगर आप इसी एन्युइटी की प्रेजेंट वैल्यू मांग लो, then the value is periodic payment divided by I into 1 minus 1 plus I raised to minus 1. Now, जब नॉन एनुअल कंपाउंडिंग होता है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको 10% दूंगा और एनुअली कंपाउंड करूंगा तो 10% मिलता है, बट अगर मैंने आपको बोल दिया 10% दूंगा बट सेमी एनुअली कंपाउंड करूंगा तो एनुअली 10 से ज्यादा मिलता है, एंड दैट 10 से ज्यादा इज व्हाट वी कॉल द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो व्हेन आई टेल यू आई एम गिविंग यू 10% एनुअली, देन इफेक्टिवली क्या मिलेगा? 10%. But if I tell you कि I am giving you 10%, but I am going to quarterly compound, effectively 10 नहीं मिलता, 10 से हल्का सा ज्यादा मिलता है. कितना ज्यादा is given to you by the effective rate of interest. Now the formula for this is the exact formula for compound interest. ये compound interest का formula है, यहाँ पे एक के आएगा और यहाँ पे एक के आएगा, बस एक फर्क है, हम ये किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम 100 रुपए में कितने का फर्क पड़ता है ये चेक करने के लिए कर रहे हैं, एंड हम एक साल में कितना फर्क पड़ता है उसके लिए कर रहे हैं. सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 प्लस आई बाई के रेज टू के माइनस 1 इंटू 100.
एंड ये भी मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया है, बट प्रीटी मच दिस इज अराउंड व्हाट your questions for simple and compound interest are going to follow. It's mostly of the type principal दिया है and interest या amount find कर दो. So start writing. I'm giving you 5 minutes and then we will start with questions. बात कम, हाथ ज्यादा.
चलो, let's move into questions. Starting with the first paper, and that is June 23 in the old syllabus. अब इसमें एन्युटी था नहीं, तो इसमें आपको एन्युटी का क्वेश्चन नहीं दिखेगा, सिंपल एंड कंपाउंड दिखेगा सिर्फ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. I don't think there is anything before that. The compound interest on 4,000 for 2 years at a certain rate amounts to 840. The rate of interest is. अब इंग्लिश कंफ्यूज मत हो जाना. The moment you read the word amount, आपको लगता है ये अमाउंट है, वैसा नहीं है. The compound interest amounts to 840, मतलब the compound interest becomes 840. मतलब 4,000 पे 2 साल के लिए मिलने वाला इंटरेस्ट 840 है. Now the good thing about compound interest is a lot of questions can be done very quickly in your calculators. अब देखो, आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है 840 का, तो कैन आई से टोटल अमाउंट कितना हो रहा है फिर 4000 प्लस 840, विच इज योर अमाउंट इज 4840. तो एक काम करो ना, pick up your principal, pick up your optional amount interests, and then find out क्या रेट पे 8480 हो जाता है 2 साल में. जैसे 4000 अगर 8% से अप्रिशिएट होता है 2 बार, 4000 प्लस 8% प्लस 8%, it does not become 4840. करेक्ट. आंसर इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें 46 मिल रहा है, हमें 48 चाहिए. Then let's try 12%. 4,000 plus 12% for the first year plus another 12% for the second is बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ये. तो आंसर 8 से बड़ा है 12 से छोटा होना चाहिए. That's 4,000 plus 10% for the first year plus 10% for the second, and the answer is 4840. तो 2 साल में अगर आपको 840 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 होना चाहिए. Well, another way of going about it is stick to your formula, stick to your basics, stick to your guns, and you will get an answer. Principal being 4,000, period being 2 years, rate or rather interest is not known, but what I know is the compound interest that I get is 840. So can I say the compound interest is principal into 1 plus I raised to n minus 1. 840 is 4,000 into 1 plus I raised to 2 minus 1. 4,000 goes to the other side and divides. 840 divided by 4,000 is 1 plus I square minus 1. What is 840 divided by 4,000? 0.21 is equal to 1 plus I square minus 1. 1.21 is 1 plus I square. स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेना पड़ेगा. 1 plus I square is 1.21. Then 1 plus I is 1.1. 1 plus I is 1.1. Then I is 0.1. या रेट कितना होगा? 10% होगा. 10% is the answer. That's question number 1. Moving on to question number 12, 13, 14, 15, 16, and 17. A lot of these questions, especially simple compound based, annuity not as much, but especially simple compound based, can be directly finished in the calculator. A person deposits 2,500 at 7% per annum, simple interest for 3 years. The amount he will get back. 2,500 इन्वेस्ट कर रहा है at 7%. तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना आपको अमाउंट मिलता है पहले. सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट नहीं मिलता. सिंपल इंटरेस्ट में पहले इंटरेस्ट मिलता है. तो अगर आपने 2,500 डाला है 7% पे 3 साल के लिए, तो मैं आपको टोटल अमाउंट नहीं बता सकता.
मैं आपको इंटरेस्ट बता सकता, 2,500 पे अगर आपको 7% मिल रहा है तो आपको हर साल 175। एंड द रीजन वाई इट्स कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट इज, एक साल में 175 तो एवरी साल 175। ऐसे कितने साल के लिए मिल रहा है? 3 साल के लिए। तो कितना मिलेगा टोटल? बड़े एक मिनट, आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 2,500। तो कहना इसे 3,025 रुपया रिटर्न मिलेगा। कहना इसे the answer is C. Or what you could also do is stick to your formula and finish it off. The principal being 2,500, the period being 3 years, the rate being 7, so the interest being 0.07. You want the amount? The amount is principal into 1 plus I raised to n. The amount is 2,500 into 1 plus 0.07 raised to 3. The amount being 2,500 into 1.07, sorry, 1 plus, simple है ना ये, ni, so 1 plus 3 into 0.07, 7 3s are 21, so that's 1.21. In your calculators, 2,500 into 1.21, 3,025, 3,025. That's 17, 18, 19, and 20. That's that then. 2 questions. And like I told you, one simple, one compound. Compulsorily. Going back to, I don't think I have more rows. I will have to add a few. आप ऐड कर दो आपका चैप्टर. Just the 2 questions. Very quickly write them down, please. मैं ये ऊपर कॉपी कर रहा हूं ताकि जूम कर सकूं थोड़ा.
Calculator method for the first one is 4000 से इंटरेस्ट मिल रहा है 840 का, तो अमाउंट हो रहा है 4840। अब ये अमाउंट क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले अमाउंट मिलता है फिर इंटरेस्ट, इसलिए कैलकुलेटर आपको इंटरेस्ट नहीं देता, अमाउंट देता है। तो अगर 840 का इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब अमाउंट 4840 है। तो 4000 को क्या रेट से अप्रिशिएट करके 4840 होता है। 4000 को अगर +10% फॉर द फर्स्ट ईयर कर दो, +10% फॉर द सेकेंड ईयर कर दो, तो 4840 होता है, जिसमें से 4000 इज योर प्रिंसिपल एंड 840 इज द इंटरेस्ट। दैट इज द आंसर इज 10%। सिंपल में आपको अमाउंट नहीं मिलता, आपको पहले इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपने 2500 रखे हैं एट 7%, तो एवरी ईयर 175 मिलता है आपको। तो 3 साल के लिए आपको 525 मिलता है। ये है इंटरेस्ट। इसमें अगर मैं मेरा 2500 ओरिजिनल ऐड कर दूं तो अमाउंट 3025 होता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। What does the question say? The question says that a sum will double itself at simple interest per annum in 8 years. एक सम खुद का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितने साल में, 8 साल में। देन व्हाट इज द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मांग रहे हैं, क्या रेट पे डबल हो जाएगा। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग अबाउट द क्वेश्चन। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 is what you can do is use the shortcut. Simple interest, yeah, when in non-compound there is a straight formula, and the straight formula is अगर पैसा अपने आप में x टाइम्स हो रहा है तो you will know the period is कितनी टाइम्स हो रहा है, -1 divided by the rate into 100। आपका पैसा कितना हो रहा है, डबल, कितने साल में, 8 साल में। तो अगर आपका पैसा डबल हो रहा है 8 साल में, तो 8 is equal to 2 minus 1 upon r into 100। और in the next step, r उधर 8 इधर, r is 2 minus 1 is 1 upon 8 into 100। then what is r, 12.5 होना चाहिए मेरे हिसाब से। yes, so the rate should be 12.5%। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 नहीं याद रखना सर ये फॉर्मूला, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, पीरियड दिया आपको, रेट मांगा है, तो लगा दो फिर अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस एन आर अपॉन 100। बोल दो प्रिंसिपल डबल हो रहा है, मतलब अमाउंट इज डबल द प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 8 आर अपॉन 100। ये प्रिंसिपल विल गो टू द अदर साइड एंड कैंसिल। Can I say 2 is 1 plus 8r upon 100? 1 goes to the other side and subtracts. 1 is 8r upon 100. Cross multiply. 100 upon 8 is r, or the rate is 12.5. So either way, the answer works out to be 12.5. Correct? That is question number 5. Going back to the paper, immediate next question, question number 6। पिछला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट था, तो ये क्या होना चाहिए, ये कंपाउंड होना चाहिए। The present value of 2704 due in 2 years at 4% compound interest when interest is paid yearly. Now they've changed the wording. They've used words like present value. So let's go back.
जब आप पैसा बैंक में रखते हो और वो फ्यूचर में कुछ अमाउंट हो जाता है, तो नाउ वी चेंज द वर्ड्स। प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू बुलाया जाता है एंड अमाउंट को फ्यूचर वैल्यू। तो कुछ फर्क नहीं है, इट्स द सेम, जस्ट द नेमिंग इज चेंज। यू आर टेलिंग मी यू वांट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2704, तो 2704 आपका क्या है, फ्यूचर है। तो कहना इसे फ्यूचर में अगर वो 2704 हो रहा है जिसका प्रेजेंट मुझे निकालना है इन अ पीरियड ऑफ 2 years एट अ रेट ऑफ 4%, तो अगर रेट 4% है तो इंटरेस्ट 0.04 है। मैं पहले लिखता था अमाउंट इज, बट अब लिखूंगा फ्यूचर वैल्यू इज principal, which is the present value, into 1 plus I raised to n. Nothing changes. बाद में जो पैसा मिलने वाला है उसे फ्यूचर, अभी जो मेरे पास पैसा है उसको प्रेजेंट। तो प्रिंसिपल बिकम्स द प्रेजेंट वैल्यू एंड अमाउंट बिकम्स द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर में मुझे 2704 चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए ये पूछ रहे हैं। अगर पैसा 4% पे 2 साल रखा जाए तो I will say 2704 is the present value into 1.04 square. In your calculators, 1.04 का square 1.0816 डिवाइड कर दो, प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है 3000, 2000, 500, 2500, करेक्ट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन उठा लेते और हर एक ऑप्शन को 2 साल के लिए 4% से अप्रिशिएट कर देते और चेक करते 2704 कब आता है। अगर मैं 2400 को 2 बार 4% से अप्रिशिएट करता हूं तो वो 2596 बनता है। आई वॉन्टेड टू बिकम 27, बहुत कम है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। एक मिनट, ये ट्राई भी करूंगा क्या मैं, आई एम नॉट स्टूपिड, क्योंकि 2400 नहीं पहुंच पाया 2700 तक, तो 2200 कैसे ही पहुंचेगा। ये ऑप्शन विल बी इवन मोर स्टूपिड। व्हाई? क्योंकि 2700 इज ऑलरेडी वेरी क्लोज। अगर 2700 को 4% से बढ़ाऊंगा ना, वो 2700 4 क्रॉस करके बहुत आगे चला जाएगा। Can I say my last option is 2500? 2500 when appreciated with 4% for the first year and then another 4% for the second year, I get 2704. So the answer is going to be 25. Is this clear to everyone? Moving on to, is that, are those the only two questions? Yes. Then let's very quickly go back to our table and tell them कि कितने questions थे। दो again, one simple, one compound. Very quickly start writing that down.
Now these were the old papers. Let's move into the new and see, has the addition of annuity caused any changes? Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. What are the questions here? What sum of money will yield 1407 as interest in 1.5 year at 14% simple interest per annum? तो क्या बोल रहे हैं, कितना पैसा रखना पड़ेगा जिससे इंटरेस्ट मिलेगा? कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1407 कितने साल में? 1.5 साल में एट 14%. You know what, we can evaluate options. चेक कर लेते हैं इसमें से कौन 1.5 साल में 1407 देगा एट 14%. एंड सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट पहले इंटरेस्ट ही दे देता आपको. सो लेट्स स्टार्ट विथ, अगर मैं 6,700 रुपया रख दूं बैंक में एंड इफ आई फाइंड आउट कि इसका 14% होता कितना है, तो 938. बट ये 938 1.5 साल के लिए मतलब 1.5 बार मिलेगा. कैन आई से दैट्स द आंसर? The answer is 6700. और what you could do is you could say कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1407 का in a period of 1.5 years at a rate of 14%. तो मुझे प्रिंसिपल जानना है. सिंपल इंटरेस्ट इज PNI. अगर रेट 14 है तो इंटरेस्ट 0.14 है. सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1407. सो 1407 इज द प्रिंसिपल into 1.5 into 0.14. So 1407 upon 1.5 into 0.14 is the principal. Principal is in your calculators 1407 divided by 1.5 divided by 0.14 कितना होता है? 6700. 6700 मिल जाता है. Is this clear to everyone? Yes. Shall we? I can hear. Question number 15, 16, 17, 18, 19 and 20. A sum of money becomes 3364 at 16% compounded annually from 2 years. The sum of money is. तो कर ही लो कैलकुलेटर में. कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको डायरेक्टली क्या अमाउंट बनता है वो मिल ही जाएगा. 2200 को अगर आप 2 साल 16% से अप्रिशिएट करते हो तो वो कितना बन जाता है? सॉरी, 2200 को अगर आप 16% से अप्रिशिएट करते हो, 2200 को अगर आप 16% से अप्रिशिएट करते हो बराबर 2 बार तो बन जाता है 343. 3433 बहुत आगे चला जाता है. मुझे कम चाहिए तो अभी कम में एक ही ऑप्शन है 1800. चेक करते हैं. 1800 को अगर आप appreciate करते हो by 16% for the first year and then 16% for the second. ये भी नहीं आ रहा. सॉरी, अच्छा 2500. ओके, तो दिस इज फॉलिंग शॉर्ट एंड दिस इज गोइंग ओवरबोर्ड. नहीं, 2200 वाज आल्सो फॉलिंग शॉर्ट. तो 2500 ही ट्राई करते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है. Plus 16% for the first year, plus 16% for the second. 3364. So the money is going to become rupees 3364
in a period of 2 years at a rate of 16, तो इंटरेस्ट बन जाता है 0.16. Amount is principal into 1 plus I raised to n. 3364 is principal into 1 plus I, which is 0.16 square. So 3364 is principal into 1.16 square. In your calculators, can somebody tell me what 1.16 square is? 3364 is P into 1.3456. Perfect. Take this to the other side. Principal is 3364 divided by 1.3456. What is the principal? 2500 rupiah. The answer is going to be D. Done? And that's question number 20. So no point looking. That's the last one. Let's very quickly go back to our tables. 2 questions. Again, one simple, one compound. They haven't gone to the annuity bit yet. Very quickly write that down for me, please. Any questions you have in the meantime? Ask.
चलो, quickly moving on to the next paper, and that is the second paper in the new syllabus, December 23. Question number 4. A person deposited 1,000 rupees in a bank at 4% per annum, simple interest. What will be the amount after 10 years? कैलकुलेटर में कर दो. बट हाँ, एक मिनट, सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट बता सकता हूं 10 साल. ग्रेट. 1,000 रुपया डाल दिया बैंक में. 1,000 रुपया जब 4% रिटर्न देता है तो हर साल 40 रुपया रिटर्न मिलता है. जब 40 रुपया रिटर्न 10 साल के लिए मिलेगा तो वो 400 हो जाता है. Along with the 1,000 rupees that you deposited, it's an amount of 1,400 rupees. That's your answer. What you could also do is stick to your formulas and write it down. You are depositing a principal of 1,000 for a period of 10 years at a rate of 4%. So interest is 0.04. Amount is principal into 1 plus mi. The amount that it will become is 1,000 into 1 plus 0.04 into 10. Amount is 1,000 into 1 plus 0.4. Amount is 1,000 into 1.4. Amount is 1,400. The answer is going to be B, 1,400. Swiftly moving on to the next, and that is question number 5. What does the question say? A sum of 10,000 is deposited at compound interest, becomes double after 5 years. After 20 years, it will become what? Now, there are two different ways of going about the question. I want you to pay attention. आपने पैसे रखे 10,000 और वो एक सर्टेन टाइम के बाद डबल हो गए. कितने टाइम के बाद? 5 साल के बाद. नाउ दे आर आस्किंग यू तो 20 साल बाद क्या होगा. अरे इंटरेस्ट बता दो, बता देता हूं. इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है. हाँ, तो ये जो पहला दिया है ना कि 10,000 डबल हो जाता है, वो आपको इंटरेस्ट दे देगा. डोंट वी नो द डबलिंग रूल? व्हाट इज द डबलिंग रूल? ऑल्सो नोन एज द 72 रूल. कि अगर आपका पैसा विच इज 10,000 डबल हो रहा है 2 टाइम्स 10,000, बता दो क्या पीरियड है, मैं रेट दे दूंगा, या वाइस वर्सा, आप रेट दे दो, मैं पीरियड दे दूंगा. आपने पीरियड दिया है तो रेट आई कैन गिव यू. 72 रूल बोलता है कि अगर पैसा डबल हो रहा है तो n इज 72 बाय r. मतलब 5 इज 72 बाय r. तो क्या रेट मिला होगा? r इज 72 बाय 5 विच इज 14.4. दिस इज द रेट दैट यू मस्ट बी गेटिंग. और अब अगर रेट पता चल गया ना तो वो पूछ रहे हैं 20 साल बाद इस पैसे का क्या होगा. 10,000 अगर मैंने 20 साल के लिए रखा एट 14.4, मतलब इंटरेस्ट ऑफ 0.144, तो उसका क्या होगा बताता हूं. I will say that the amount that it will become is principal into 1 plus I raised to n. So the amount is 10,000 into 1 plus 0.144 raised to 20. The amount that it will become is 10,000 into 1.144 raised to 20. In your calculators, 1.144, raise it to 20. कितना आता है? 1474078. तो वो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद
कैन आई से 14,740 हो जाएगा? यस और नो? यस। अब इफ यू नोटिस, नहीं 1 लाख हो जाएगा ना, वो दो जगह शिफ्ट हो जाएगा, तो 1,47,407.80 हो जाएगा। इफ यू लुक एट योर ऑप्शंस नाउ, व्हाट डू यू रियलाइज? ये तो ऑप्शन में है नहीं। करेक्ट? व्हाट डज दैट मीन? आवर सॉल्यूशन इज रॉन्ग? नो। एंड दिस वेयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ये 72 रूल क्या है। 72 rule is a ballpark value of finding the real. ये बेसिकली ना बैंकर लोग यूज करते हैं। You have a banker friend and you tell him कि अरे मुझे बोल रहा है ना 4 साल में पैसा डबल करके दे देगा, तो आपका बैंकर फ्रेंड ना इमीडिएटली रेट कैलकुलेट कर लेगा इस रूल से। विल दैट बी द एग्जैक्ट रेट? नो, इट विल नॉट बी द एग्जैक्ट रेट। तो इसका फायदा क्या है? बैंकर्स आर बॉलपार्क एबल टू टेल यू कि देख ये रेट मिल रहा है, अच्छा रेट नहीं है, इससे अच्छा तो एफडी में मिलता है, ये रेट मिल रहा है बहुत अच्छा है, ले ले, गुड इन्वेस्टमेंट। तो इट इज अ बॉलपार्क वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है? हियर इफ यू लुक एट इट, दिस आंसर इज वेरी 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 क्लोज टू 1,50,000, but my problem is, am I confident enough that it is 1,50,000? That the answer is not, क्योंकि 1,60,000 भी है, तो अब पता नहीं if I am giving the right answer or not. And because of which this question can be done in a slightly different manner. And for that, I want you to understand how simple and compound interest works. Or I want you to understand the working of simple and compound interest. तो आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर मैंने आपको बोला कि आप 1,000 रुपया रख दो बैंक में, मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट दूंगा 10% का। ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है पता है? 10% मिलेगा। 1,000 का 10% कितना होता है? तो ये कितना हो जाएगा? 1,100। अब नेक्स्ट साल और 10% मिलेगा, तो कितना? सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट बोलता है तू कहीं भी खड़ा रहे, मैं इंटरेस्ट इसी पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो तुझे कितना मिलेगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 1,200। तीसरे साल के लिए रखा तो 1,300। इट हैज नथिंग टू डू विथ what is your current value. It has everything to do with what was your original value. This is it. कंपाउंड का वैसा नहीं है। कंपाउंड जब आपको पैसा मिलता है, तो जो नया पैसा मिलता है उसके ऊपर 10% मिलता है, उसके ऊपर 10% मिलता है, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? एंड दिस वेयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड डबलिंग एंड ट्रिपलिंग। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने 1,000 रुपया रखा है बैंक में, करेक्ट, एंड इफ आई टेल यू कि पैसा डबल हो रहा है, तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज, पैसा डबल हो रहा है मतलब 1,000 का क्या हो रहा है? एवरीबडी अग्रीज? बराबर? तो अगर 1,000 का 2,000 हो रहा है, क्यों 2,000 हो रहा है? Why is it doubling? What do you mean by double? डबल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? Thanks. Exactly what is it happening because of which your money is doubling? इंटरेस्ट मिल रहा है कितना? 100%। जितना प्रिंसिपल था उतना, इसलिए पैसा डबल हो रहा है। बराबर? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं पैसा रखूंगा तो वो कितना हो जाएगा? क्योंकि और 1,000 मिलेगा ना, एंड 3,000 होगा। डू यू नोटिस ये चेंज नहीं होता? अब कितना मिलेगा? डू यू नोटिस ये 1,000 है? लेट मी चेंज द सिचुएशन। अब पीरियड कुछ भी हो, अगर मैंने आपको बोला ना तो प्रिंसिपल डाल, पैसा एक सर्टेन पीरियड में डबल हो जाए, तो डबल क्यों होता है पता है? क्योंकि आपको एक प्रिंसिपल मिलता है। और मैंने वापस उतने पीरियड के लिए पैसा रखा तो वापस वही एक प्रिंसिपल मिलेगा, 3 प्रिंसिपल हो जाएंगे आपके पास। वापस उसी पीरियड के लिए रखा तो एक और प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल हो जाएंगे आपके पास। इज दिस क्लियर? लेट मी चेंज द क्वेश्चन। मैंने आपको बोला तूने पैसा रखा है और एक सर्टेन पीरियड में, लेट्स से 5 साल में, वो पैसा ट्रिपल हो रहा है। कैन यू टेल मी ट्रिपल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? 2 प्रिंसिपल मिल रहे हैं आपको, तो मुझे बताओ और 5 साल रखूंगा तो क्या मिलेगा?
और 2 प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएंगे 5 प्रिंसिपल, मनी विल बिकम 5 टाइम्स, और 5 साल रखा तो और 2 प्रिंसिपल, मनी विल बिकम, everybody understands this 100% sure? This does not follow in compound interest, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है मैं इंटरेस्ट तेरी ओरिजिनल पे नहीं, तेरी करंट वैल्यू पे कैलकुलेट करता हूं। तो यहां पे ना गेन सेम नहीं रहता, गेन चेंज होते जाता है। क्यों चेंज होते जाता है? क्योंकि सर मुझे इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे नहीं मिलता, अब भी वाले अमाउंट पे मिलता है। तो अगर मैंने पैसे 5 साल के लिए रखे एंड आई विल से द मनी इज ट्रिपलिंग इटसेल्फ 3 टाइम्स इटसेल्फ, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, क्योंकि सेम इंटरेस्ट कंटिन्यू होगा। मैं पूछूंगा पैसा क्या हो रहा है, मैं बोलूंगा ट्रिपल हो रहा है। तो अगर पैसा ट्रिपल हो रहा है ना, तो और 5 साल रख के ये पैसा क्या हो जाएगा, ये पैसा ट्रिपल हो जाएगा, और क्या बनेगा 9 प्रिंसिपल्स, और 5 साल रखूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा ट्रिपल एंड बिकम्स 27 प्रिंसिपल्स। This is the beauty called the power of compounding. तो सिंपल इंटरेस्ट में ना गेन इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना द लॉजिक ऑफ गेन इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट में ना तुझे एक पीरियड के लिए क्या मिलता है ना, उतने पीरियड के लिए उतना ही मिलता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना क्या लॉजिक से गेन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम लॉजिक से गेन होता रहे। अगर एक क्वेश्चन होता और बोलता कि 5 साल में पैसा डबल हो रहा है ना, तो डबल हो रहा है मतलब प्रिंसिपल एक और प्रिंसिपल से बढ़ रहा है, तो अब तू हर 5 साल ना एक प्रिंसिपल लेता जा मुझसे। यहाँ पे वैसा नहीं है, अगर पैसा डबल हो रहा है ना तो हर 5 साल पैसा डबल होता रहेगा, P2P बन जाएगा, 2P 4P 8P। इज दिस क्लियर एवरीवन? 100% श्योर? कैन आई कम बैक टू आवर क्वेश्चन? पहला सवाल तो यह है, अपना क्वेश्चन सिंपल पे है कंपाउंड पे? कंपाउंड पे है, तो द गेन इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द लॉजिक विथ व्हाट द गेन इज हैपनिंग। इज द गेन डबलिंग और द गेन ट्रिपलिंग इज द क्वेश्चन इन पॉइंट। So we are going to say that if a sum of money doubles in 5 years, तो मैं ये बोलूंगा मैंने प्रिंसिपल रखा था, डबल होके 2P बन गया। अब मैं एक सवाल पूछूंगा खुद से, ये जो डबलिंग हुआ है ना, ये सिंपल पे हुआ है कंपाउंड पे? क्योंकि अगर ये सिंपल पे हुआ है ना तो मैं गेन लिख लूंगा, ऊपर लिख दूंगा 5 साल और नीचे लिख दूंगा गेन एक प्रिंसिपल। एंड यू नो व्हाट, नाउ एवरी 5 years I will keep gaining one principal. But unfortunately or fortunately, this is happening at compound. Then the gain is not important. The logic of the gain is important. अगर ये डबल हो रहा है तो और 5 साल में ये क्या होगा, डबल होगा। 5 साल में डबल होके 2P क्या बन जाएगा, और 5 साल रखूंगा तो वो भी डबल हो जाएगा और बन जाएगा 8P, और 5 साल रखूंगा ना तो इट विल बिकम 16Ps विच इज, और 5 साल में डबल। बट एक मिनट, उन्होंने 20 साल में पूछा, हो गया ना 20 साल, कैन आई से 20 साल में P 16P हो जाएगा। तो अगर आपने 10,000 रुपए रखे थे तो 10,000 रुपए 16 टाइम्स हो जाएंगे, विच इज 1,60,000 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? With this, I want to convey two things. Number one, this logic, and number two, that was 72 and 114 rule. Ballpark interest find करने के लिए अच्छा है, नहीं तो they do not work for long term questions. उसको यूज करके और कुछ फाइंड करना होगा ना, फेल हो जाता है। Is that understood? 100% sure? Clear? Everyone? Anybody has any questions? This was question number 5, which was the second question. Are there any more questions? 6, 7, 8, 9, 10? No? That's that then. 2 questions. Come back to your table. We have 2 questions there. 3 more papers to go. Make it quick. Let's not leave the chapter halfway.
लिखने का काम फटाफट कर दो, ये लिख दो पहले एंड देन आई स्क्रॉल। Let's very quickly come to the next paper, which is June 24, obviously in the new syllabus, question number 4. What does the question say? If the interest rate is 6% per annum, that for what sum of money in rupees will the difference between compound and simple interest for 2 years be 13.5?
Now, we've done the shortcut formulas for this because otherwise this becomes a very, very, very lengthy value. So I'm going to write down the formulas, but at the same time, I'm going to show you a short example of what this means. What this means is, अगर मैं पैसा simple and compound interest पे रखता हूं, फर्क क्या पड़ता है? What difference does it make? Now, technically, अगर मुझे एक एग्जाम्पल लेना है और मैं 1000 रुपया ले लूं और मैं चेक करूं कि 1000 रुपए पे 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलता है. अब देखो, 10% अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होना, या लेट्स से 12% ले लेते हैं, तो व्हेन यू डू 1000 का 12%, तो दैट इज 120 बराबर. तो 2 साल के लिए 240, 3 साल के लिए 360. कॉमन सेंस, क्योंकि उसी रेट से बढ़ता है. कंपाउंड का वैसे नहीं होता. कंपाउंड पे अगर मैं 1000 रुपया रखूं और आपको बोलूं बताओ जरा पहले साल क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे पागल है क्या, पहले साल भी तो 120 ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि कंपाउंड है, सिंपल हो. पहले साल में तो वही ओरिजिनल प्रिंसिपल है. हाँ, फर्क अगर पढ़ना है तो इसके बाद पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब ये 1000 रुपए 12% से अप्रिशिएट होता है और ये 1120 बनता है, अब नेक्स्ट ईयर सिंपल में 1000 पे, बट कंपाउंड में 1120 पे इंटरेस्ट मिलता है. सो व्हेन दिस yields a 12% interest, you will get 134.4 as interest. And if I put the 1200, if I put the 1000 and I appreciate it at 12% for 1 year, 12% for the second year, and 12% for the third year, I will get 1404. अब इसमें से अगर 1000 हटा दूं तो ये कितना बनता है? 404.928. मैंने रॉन्ग लिखा क्या? एक सेकंड चेक कर लेता हूं. 1000 appreciated by 12% for the first year, appreciated by 12% for the second. हाँ बराबर 254.4 होगा ये. 254.4 will be the interest. तो देख रहे हो एविडेंटली फर्क है. हाँ, बट 1 साल में तो कोई फर्क नहीं है, 0. 2 साल में फर्क है. कितने का फर्क है? 14.4 रुपीज का. 3 साल में कितने का फर्क है? 44.928 का फर्क है. करेक्ट. अब अगर ये प्रिंसिपल पता है ना तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रिंसिपल पता नहीं है ना दोस्त, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. Becomes too much to calculate. So what we've done is we've devised a formula to do this. And the formula is, अगर आप कोई भी प्रिंसिपल रखते हो 1 साल के लिए, so the difference between compound interest and simple interest will be, 1 साल के लिए there is absolutely no difference. डिफरेंस चालू होता है 2 साल से. 2 साल से द डिफरेंस इज PI स्क्वायर इज 2 साल का डिफरेंस, एंड 3 साल का डिफरेंस इज PI स्क्वायर I प्लस 3 इज द 3 साल का डिफरेंस. तो अगर मैं यही सवाल आपसे पूछता पर बोलता ये सब बकवास कर मत, सीधा बता दे 1 साल में क्या फर्क पड़ेगा, तो बोलते ना 1 साल में फर्क ही नहीं पड़ेगा. अच्छा ठीक है, 2 साल में क्या प्रिंसिपल है? 1000. क्या रेट है? 12%. तो इट इज 1000 इंटू 0.12 का स्क्वायर. 1000 इंटू 0.12 इज 0.0144. करेक्ट. 1000 मल्टीप्लाई कर दूं तो कहना है 14.4 हो जाता है. परफेक्ट, टैली होता है. 3 साल के लिए इट इज PI स्क्वायर which is 0.12 square into 1 plus I plus 3. तो ये तो पता है 14.4 बन गया था. I क्या है? 0.12 plus the 3. So 14.4 into 3.12. What is 14.4 into 3.12? 44.928. Can I say वो भी टैली होता है? And this is the formula for difference between CI and SI for 1 year, 2 years and 3 years. तो मैंने जो बकवास किए नहीं समझिए, फैंटास्टिक. क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि पैसा अगर सिंपल एंड कंपाउंड पे रखते हो
एक साल में क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। 2 साल में क्या फर्क पड़ता है? पी आई स्क्वायर। 3 साल में क्या फर्क पड़ता है? पी आई स्क्वायर आई प्लस 3। गो बैक टू योर B6 एंड मेक अ नोट ऑफ दिस। तो थोड़ा बेटर लिखूं मैं भी है। One year, 0, 2 years, pi square, 3 years, pi square, I plus 3. Write that down. Chalo. Going back to the question. What are the questions here? If the interest rate is 6% per annum, for what sum of money the difference between simple and compound for 2 years is 13.5. So difference between CI and SI क्या दिया? CI minus SI for 2 years is 13.5. What is the rate? 6%. तो इंटरेस्ट की बात करो तो 0.06. बट मुझे पता है कि 2 साल के लिए सी आई माइनस एस आई क्या होना चाहिए? पी आई स्क्वायर. तो अगर सी आई माइनस एस आई पी आई स्क्वायर होना चाहिए तो 13.5 पी इंटू 0.06 का स्क्वायर होना चाहिए. 6 square is 36. So 13.5 is P into 0.0036 divided to the other side. Principal is 13.5 divided by 0.0036. What is the principal? One again. 3750. 3750. Yes, correct. But if I tell you something now, this question is extremely stupid when options are given to you. Why? आपको क्या करना है? 2 साल के लिए इसका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. डिफरेंस चेक करना. डिफरेंस कितना होना चाहिए? 13.5. होता है तो आंसर है. मैं एक क्वेश्चन ठीक से कैलकुलेटर में दिखाने वाला हूं so that you don't have to put pen to paper. But I don't want you to do anything. Sit back and look at what I'm doing. क्योंकि बाजू वाले से बात करते हो, लिखने की कोशिश करते हो, उसी में कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, उसी में मैं क्या कर रहा हूं ये चेक कर. ठीक है? तो रजिस्टर नहीं हो पा रहा, उतना मल्टीटास्किंग नहीं हो रहा आपसे. ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान. If I pick up the option 15730, what I'm going to do is step 1, मैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करूंगा 2 साल के लिए एट 6%. 5730. अनफॉर्चुनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देता. क्या देता है? अमाउंट देता है. कोई बात नहीं, वी विल अप्रिशिएट दिस एट 6% for the first year,
appreciate this at 6% for the second year. ये हुआ मेरा प्रिंसिपल, ये हुआ मेरा अमाउंट, इसमें से निकाल देता हूं प्रिंसिपल, तो ये हुआ मेरा इंटरेस्ट, इसको ना मेमोरी में ऐड कर देता हूं m प्लस, लेट इट सिट देयर। अब क्या करूंगा, उसी वैल्यू को ले लूंगा 5730 और इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। अगर ये 6% रिटर्न देता है 2 साल के लिए, देन दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, इसको मेमोरी से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। व्हेन आई रिकॉल द डिफरेंस शुड बी ऑफ 13.5, नहीं है, द डिफरेंस इज टू हाई, देन दैट इज नॉट माय आंसर। इफ दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर होने के भी चांसेस बहुत रेयर है, क्यों, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो डिफरेंस इसी के आसपास कुछ होगा। Then we move into the last bit, and that is prime 3750, 3750 जब अप्रिशिएट होता है 6% से फॉर द फर्स्ट ईयर एंड देन 6% से फॉर द सेकेंड ईयर, दिस इज द अमाउंट दैट इट बिकम्स। When I remove the principal from it, this is the interest. Let me put it in the memory m plus. Let me check 3750 सिंपल में क्या देता है, 225 for 2 years, that is 450. Let me subtract it from the memory. If I recall, I should see a 13.5. If I see a 13.5, that's going to be the answer. Is this clear to everyone? Whilst you write this down, I would want you to try this also in your calculators. If you still want me to do it, I will repeat it for you. Understand the calculation that I have done, and understand the difference between a simple interest calculation and a compound interest calculation. Compound में amount मिलता है, अगर principal interest चाहिए तो principal हटा दें। सिंपल में इंटरेस्ट मिलता है, अमाउंट के लिए उसमें आपको प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा, बट इट्स ओके, वी वांट इंटरेस्ट हियर, तो सिंपल में इट वर्क्स फॉर अस, कंपाउंड में इट डज इट। तो कंपाउंड में अमाउंट फाइंड करके इंटरेस्ट, सिंपल में इंटरेस्ट ही मिल जाता है। कंपाउंड का इंटरेस्ट मेमोरी में ऐड, सिंपल का इंटरेस्ट मेमोरी से सब्ट्रैक्ट, जो बचता है डिफरेंस इज द डिफरेंस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कंपाउंड का इंटरेस्ट सिंपल के इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा होता है, एंड बिकॉज हमेशा ज्यादा होता है, हम कंपाउंड पहले कैलकुलेट करते हैं एंड फिर सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट, दैट वाज वन क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. What does the question say? The question says that a bank offers 4% nominal interest with quarterly compounding. तो कंपाउंडिंग साल में एक बार नहीं हो रहा, कितनी बार हो रहा है, 4 बार। What is the effective rate of interest? तो वो बोल रहे हैं अगर 4% मिल रहा है बट साल में 4 बार, तो इफेक्टिवली 4 नहीं मिलता, 4 से ज्यादा मिलता है। तो कैन यू टेल मी ज्यादा मतलब कितना ज्यादा? Well, then we stick to the typical formula. The nominal rate of interest that we have been committed is 4%. तो I की वैल्यू हो जाती है 0.04। कंपाउंडिंग हो रहा है 4 साल में 4 बार, तो अगर मैं I को 4 पार्ट में तोड़ दूं तो 0.04 by 4, which is 0.01। अब अगर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 plus I by k raised to k minus 1 into 100. So the effective rate of interest that you will get is 1 plus 0.01 k 4 बार minus 1 into 100. In your calculators, 1 plus 0.01 is 1.01. Raise it to 4, subtract 1 from it, and then multiply by 100. कितना होता है? 4.0604. What is the closest option do you have? 4.06. C is the answer. And again, this is also a very stupid question to do it by formula.
इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू इट बाय प्लेन लॉजिक. क्या नॉमिनल क्या बोलता है? तूने 100 रुपया रखा ना, मैं 4% दूंगा, बराबर, तो 104 बन जाए. करेक्ट. नॉन एनुअल क्या बोलता है? तूने 100 रुपया रखा ना, मैं 4% दूंगा, बट एक बार नहीं, कितनी बार? तो ठीक है, दे दे 16%, बैंक बंद कर और चला जा, क्योंकि तू 16% देगा, तुझे बैंक बंद ही करना पड़ेगा. तो बोलेगा ऐसा नहीं दोस्त, 4% दूंगा, बट साल में 4 बार, तो हर बार कितना? 1-1% दूंगा. इफेक्टिवली 4% देना है मुझे, एक साथ 4% नहीं दूंगा. तो इफ आई गिव यू अ 1% एवरी क्वार्टर, तो इस बार अगर 100 रुपया, टेक्निकली 104 ही होना चाहिए, आइडियली नहीं होता. 4 + 1% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, +1% फॉर द सेकेंड क्वार्टर, +1% फॉर द थर्ड क्वार्टर, एंड +1% फॉर द फोर्थ क्वार्टर, बनता है 104.060401, विच मीन्स इफेक्टिवली मिलता है कितना? 4.060401%. Isn't that the answer anyway? Is this clear to everyone? सर ये हाफ ईयरली होता तो 4% देना है पूरे साल में, बट 2 बार, 2 बार 4, 4, 8 मत दे देना. 2 बार क्या दोगे? तो 100 विल अप्रिशिएट बाय 2% वंस एंड 2% वंस. जो भी इफेक्टिवली होगा 4 से ज्यादा ही होगा, 104 से ज्यादा मिलेगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी योर नॉर्मल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. और याद रखना, ये 100 रुपया लेके ही करना, ताकि फिर बराबर 100 रुपए का डिफरेंस पता चल जाए. कोई कोई लोग 1 रुपए का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, सेम ही आंसर आएगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाए. एनीवेज, द आंसर टू दैट इज गोइंग टू बी, कर दिया ना मां? ग्रेट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. दो ही क्वेश्चन है, नहीं है ना एक और कोई? सो गोइंग बैक टू द टेबल एंड 2 क्वेश्चंस देयर. लिख लो प्लीज फटाफट.
आ जाओ to the next paper, which is the December 24 in the new syllabus. Question number 4. And the thing about simple compound interest questions are, if you want to make them unsolvable using the calculator, you really have to work hard to create a question that way, because of which it's very rare that a question in simple compound cannot be solved using a calculator. Anyway, going back to, am I audible to everyone online? If I'm not audible to you, I think it's time to see an ENT. A given sum of money gives 50 rupees as simple interest for 1 year and 102 as compound interest for 2 years. Determine the rate of interest. Now, there are two ways of going about it. One is you can actually use common sense and solve it, or you can actually solve it using formulas. Let's stick to the basics, and that is, a given sum of money gives 50 rupees as simple interest for 1 year. तो प्रिंसिपल पता नहीं है मुझे बस इतना पता है कि सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कितना, 50 रुपया। कितने साल में? 1 साल में। देन कैन आई से सिंपल इंटरेस्ट इज PNI, 50 is P into 1 into I, or can I say 50 is PI? And 102 as compound interest for 2 years. 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इज 102 रुपया 2 साल के लिए। कैन आई से कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। 102 इज प्रिंसिपल, मुझे अभी भी नहीं पता, मुझे इंटरेस्ट रेट अभी भी नहीं पता, 2 साल के लिए -1। In the next step, can I say 102 is principal into 1 plus I square. Now, because ये simplify होता नहीं है, we have to open up the bracket. A square plus 2AB plus B square -1. ये बाहर का +1 और ये -1 कैंसिल हो जाता है, तो what do you get? 102 is P into 2I plus I square. Now, when I open up the bracket, what I get inside is 102 is 2PI plus PI square. But एक मिनट, PI की वैल्यू तो मुझे पता है, PI 50 है, तो रिप्लेस कर दो फिर। 102 is 2 into 50 plus, can I say PI square is PI into I? तो इसको भी अभी फिलहाल PI रख देता हूं। 102 is 2 into 50 plus 50 into I. Can I say 102 is 100 plus 50I? 100 goes to the other side. 2 is 50I. What is interest? 2 upon 50. What is interest? 0.04. So can I say 4% should be the answer? Correct? Tag lengthy. Correct? Another way of looking at the same question. आपको चाहिए क्या? You want the interest and you want the principal, क्योंकि principal भी मिसिंग है। तो look at what you are saying. आपने एक पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे रखा तो आपको 50 रुपए मिला। एक मिनट, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे रखा और 50 रुपए मिला है 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए क्या मिलेगा? सिंपल है, simple interest for 2 years is going to be 100, and we know compound interest for the same 2 years is 102. तो डिफरेंस कितना हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का? एंड डोंट वी नो कि डिफरेंस इज PI स्क्वायर व्हिच इज 2। ये आ गई एक रिलेशनशिप। होल्ड ऑन टू दिस। डोंट वी आल्सो नो कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 50? सो डोंट वी नो दैट PNI is 50?
Don't we know that PI is 50? अगर PI स्क्वायर 2 है एंड PI 50 है, सब्स्टिट्यूट कर दो. PI square is PI into I is 2. 50 into I is 2. I is 2 by 50. I is 0. कितना? 04. Isn't that right? Last one. कुछ ज्यादा ही कॉमन सेंस है. इतना ज्यादा कॉमन सेंस है कि कंफ्यूज हो जाओ. सिंपल इंटरेस्ट में 50 रुपए मिलता है, करेक्ट? तो पहले साल आपको मिला 50. अब दूसरे साल क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट पे 50 ही मिलेगा, बराबर. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है पता है? ये 50 तो मिलेगा ही, प्लस इंटरेस्ट मिलेगा. किस पे? जो तेरा पिछले पीरियड का इंटरेस्ट था. तो कहना इसे कुछ इस 50 पे इंटरेस्ट मिलके ऐड होगा. अब ये टोटल मिला के कितना होता है? 102 कंपाउंड पे. तो यहां पे एक्स्ट्रा मिल कितना आ रहा है? कहना इसे मतलब 50 पे 2 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है. अगर 50 पे 2 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना रेट पे मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट पे 50 रुपए मिलता है, बराबर. तो दूसरे साल भी तो 50 ही मिलना चाहिए. पर ये सिंपल पे सर. कंपाउंड पे क्या होता है? 50 तो मिलता है, वापस 50 मिलता है, और कुछ एडेड मिलता है. अब ये पूरा मिला के होता कितना है? 102. तो एडेड मिलता कितना है? 2 रुपया. मतलब प्रिंसिपल पे 50 रुपए मिलता है और पिछले साल के इंटरेस्ट पे 2 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है. तो इंटरेस्ट मिलता कितना है? 2/50. 0.0. इज दैट ओके? ज्यादा हो गया? कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 5. The present value of an annuity of rupees 1000 received annually for 4 years at a discount rate of 5%. तो देखो प्रेजेंट वैल्यू मांग रहे हैं, बट एक टाइम के इन्वेस्टमेंट का नहीं है. किसका है? एन्युइटी का. मतलब रिपीटेड पेमेंट्स कर रहे हो आप. क्या है आपका पीरियोडिक पेमेंट? 1000 रुपया. क्या रेट पे कर रहे हो? 5%. तो इंटरेस्ट क्या है? 0.05. कितने साल के लिए? 4 साल के लिए. इसका क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू. Present value of the annuity is periodic payment divided by I into 1 minus 1 plus I raised to minus n. So can I say present value of the annuity is 1000 divided by I, which is 0.05, 1 minus 1 plus 0.05 raised to minus 4. Present value of this annuity will be 1000 divided by 0.05 into 1 minus 1.05 raised to minus 4. आ जाओ अपने कैलकुलेटर में. 1.05 को रेज टू 4 कर दो. 234. बट -4 है ना, तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. डिवाइड इक्वल टू, करेक्ट. अब उसमें से 1 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. बट याद रखना वैल्यू नेगेटिव आएगा, बट टेक्निकली द वैल्यू इज पॉजिटिव. अब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 0.05 से. कितना आता है? 3545. 3545 is the present value of the annuity. Is that an option? 3546. कहां तक जाता है ये? हाँ, 45.95. And I believe those are the only 2 questions. And this was the first year that they asked an annuity question, even after introduction of annuity in the new syllabus. 2 क्वेश्चन, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, एक एन्युटी. फटाफट लिख लो. वन लास्ट पेपर, वी कैन क्लोज एंड बाउंस.
While you are writing, question number 4. First is typical. क्या है कि आपको 50 रुपया मिला है एक साल के लिए, तो अगर 50 रुपया मिला है, ओ सॉरी मैंने ये सोल्यूशन दिखाया नहीं, ये लिख लो पहले। 50 रुपया मिलता है अगर एक साल के लिए, तो एक साल का 50 रुपया डन। तो आई हैव अ रिलेशनशिप कि पी आई 50 है, 2 साल का 102 रुपए मिलता है, तो मैं 2 साल का फॉर्मूला लिख लेता हूं। बड़ा प्रॉब्लम है ना, इसमें दो चीजें मिसिंग है, आई भी और पी भी। तो अब ये सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद दिस इज व्हाट आई गेट, ब्रैकेट खोल दूं तो मुझे पी आई मिलता है, जिसमें मैं 50-50 सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो आई की वैल्यू आ जाती है। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, अगर सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए एक साल के लिए, तो 2 साल का 100 है। 2 साल का सिंपल 100 है और कंपाउंड 102 है, तो दोनों का डिफरेंस 2 है, मतलब पी आई स्क्वायर 2 है। इससे पी आई स्क्वायर आ गया, और एक साल के इंटरेस्ट से पी आई आ गया। करेक्ट। तो अगर पी आई मिल गया है और पी आई स्क्वायर पता है, तो पी आई स्क्वायर में पी आई सब्सटीट्यूट कर दो, आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। तीसरा एंड द लास्ट मेथड विच इज लॉजिक। टेक्निकली जब 50 रुपए मिलता है ना, तो 50 ही मिलते जाता है सिंपल में। कंपाउंड में क्या होता है, 50 पे 50 मिलता ही है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है। वो एक्स्ट्रा क्यों मिलता है, पिछले साल के 50 पे भी तो इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपए मिला ना आपको 102 में, ये पिछले 50 का 2 रुपया इंटरेस्ट है। तो 50 का 2 रुपया कितना परसेंट होता है, 4%, मतलब आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रैक्टिस होती है, मतलब ऐसे नहीं कि मैं पैदा हुआ और मेरी माँ बोली ये क्वेश्चन आएगा, मुझे तो आएगा नहीं। प्रैक्टिस किया मैंने, वो बात भी कराओ। अब इसमें बताओ मैं क्या करूं, एक छोड़ के 3।
Stop talking, and on the board, let's come to the last paper, June 25. Question number 5. Now, from the last few attempts, they've become a little artistic with the simple compound questions on the board. A sum was put at simple interest at a certain rate. So sum nahi pata, rate nahi pata, for 3 years. Had it been put at 2% higher, it would have fetched 360 more. The sum is. तो अगर आप एक सर्टन सम एक सर्टन रेट पे रखते हो 3 साल के लिए, तो कुछ एक सर्टन इंटरेस्ट मिलता है. वही अगर 2% हायर पे रखते ना, तो आपको 360 रुपया ज्यादा मिलता. तो वो सम क्या है? तो लेट्स स्टार्ट विथ, पता नहीं है प्रिंसिपल क्या है, पता नहीं है क्या रेट मिल रहा है, एंड क्या पीरियड है, 3 साल. तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा? पी एन आर अपॉन 100. अब इसमें ना मुझे ना पता है कि लेट्स कॉल दिस सिचुएशन नंबर 1, ना पता है प्रिंसिपल क्या है, इतना ही पता है कि 3 साल के लिए, ना पता रेट क्या है, अपॉन 100. सो कैन आई से सिंपल इंटरेस्ट इन द फर्स्ट केस इज 3 PR अपॉन 100. अब वो क्या बोल रहे हैं? यही पैसा जो आपको अभी भी प्रिंसिपल नहीं पता, जो रेट में रखे हो उससे 3% ज्यादा पे रख दो, नहीं 2% ज्यादा पे रख दो, फॉर द सेम पीरियड ऑफ 3 years. तो क्या मिलेगा इन द सेकेंड केस? अगेन वही P इंटू एन विच इज 3 इंटू आर विच इज R+2 अपॉन 100. So the simple interest in the second case is 3P into R+2 upon 100. Then the simple interest in the second case is 3PR plus 6P upon 100. अब बोल क्या रहे हो? जो सेकेंड केस में मिलता है ना, वो ज्यादा मिलता है ऑब्वियसली. अगर 2% ज्यादा पे रखोगे तो ज्यादा मिलेगा. कितना ज्यादा? 360 रुपया ज्यादा. तो कैन आई से द सिंपल इंटरेस्ट इन द सेकेंड केस is greater than the simple interest in the first by how much? 360. So can I say simple interest in the second case minus simple interest in the first is 360. Simple interest in the second case is 2PR plus 6P upon 100. Simple interest in the first is 3PR upon 100. And that difference is 360. 100 common denominator. 3PR plus 6P minus 3PR upon 100 is 360. Can I say 3PR cancel हो जाता है? So can I say 6P upon 100 is 360? Cross multiply. The principal should be 360 into 100 upon 6. What is the principal? 6,000 रुपया. Is that an option? And it will be a little difficult to evaluate options here, क्योंकि इससे वापस रेट निकालना पड़ेगा और फिर ऑप्शन इवैल्यूएट करना पड़ेगा, which I don't suggest. Stop and pay attention on the board, everyone. आपने एक सर्टेन सम रखा है एक सर्टेन रेट पे फॉर 3 years और एक सर्टेन इंटरेस्ट मिला. अब सब कुछ मिसिंग है, तो क्या ही फाइंड करूंगा? तो क्या ही इंटरेस्ट मिला? 3PR अपॉन 100. अगर वही जो लास्ट टाइम आर पे रखे थे ना, आर से 2% ज्यादा पे रख दो तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा. करेक्ट, ये मिलेगा. पर कितना ज्यादा? 360 ज्यादा. तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 360. So you subtract and you get 360, which gives you the principal, which should be 6,000 rupees. Is this clear? Let's come to one more question, which is question number 7. And like I said, last 2 attempts say they have started asking annuity questions as well.
On the board, everyone. What does the question say? If 1,000 is deposited at the end of each year for 5 years at a rate of 10%, then the future value interest factor of annuity is regular. तो उनको फ्यूचर वैल्यू चाहिए. आप पीरियोडिक पेमेंट दे रहे हो 1,000 रुपए का फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. रेट क्या लग रहा है 10%. तो इंटरेस्ट क्या लग रहा है 0.10. तो अगर आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए इस एन्युइटी की, देन इट इज द पीरियोडिक पेमेंट डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1. द फ्यूचर वैल्यू इज 1,000 रुपया divided by 0.10, 1 plus 0.10 raised to n, which is 5 minus 1, which is 1,000 into 1.10 raised to 5 minus 1, 1.10 raised to 5, 2, 3, 4, 5 minus 1 into 1,000 divided by 0.1, and the answer is 6105.1. Can I say the answer is 6105? A pretty straight question. Then there is question number 8, 9, 10, 11, 12, done. Can I say 2 questions there? So, before we do anything, 2 questions, total of 10 questions. 2 questions will be asked. How? Simple compound tha, to ek simple ek compound. Now they've gone a little buzzer and they're asking different kinds of questions. So difference between simple and compound पूछा है, and दोनों attempt में annuity पूछा है, एक में present value, एक में future value. So I want you to write this down, but for now take a screen grab. बैठ जाओ नीचे. Done? Yes. Take a screen grab of this. Done? Great.